Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jai Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Gaura Brahmanande, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Jai Nitai Gaura Siddhanatha Brahmanande, हरे कृष्णा। हमारा अगला कार्यक्रम है हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु का स्मृति सभा। कृपया सभी माता जी लोग इस तरफ इकट्ठा हो जाइए और सभी प्रभु लोग इस तरफ आ जाइए। मेरा राइट के तरफ सभी प्रभु लोग आ जाइए, सभी माता जी लोग लेफ्ट पर आ जाइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। Nice. All the instruments keep it here.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदि प्रभु हरे कृष्णा। 10 डिग्री और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama 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 Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol. Nitai Gaura Hari Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev. Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Gurudev. Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. गौर प्रेमानंदे हरि बोल। शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। फर्स्टली सभी भक्तों से निवेदन है कि आप कृपा करके आगे आ जाइए। जो भी माता जी से थोड़ा जितना हो सके आगे आ जाइए ताकि ये जगह भर जाए। प्लीज सभी लोग आगे आगे आ जाइए। सभी लोग नमो विष्णु। करीब 1.5 या 2 घंटों के लिए हम इस ग्रेस हमारे अनादि जगन्नाथ प्रभु जी हैं उनके बारे में अपना अपना ग्लोरिफिकेशन करेंगे। उनके जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं वो हमारे बीच हैं। We welcome on behalf of ISKCON NRJD to all of you to our temple. We are extremely pleased and happy to have you in our midst. Thank you very much. Hare Krishna. So I would like to now request His Grace Chaitanya Avatari Prabhu, Temple President, ISKCON Magadi Main Road, to please welcome the guest and kickstart the proceedings for today, please. His Grace Chaitanya Avatari Prabhu. Hare Krishna. ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानंजना शालाक्या तच्चल मिलत्यम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
by the costless mercy of Srila Prabhupada, the spiritual master, and Sri Jagannath, Baldev and Subhadra, they have very safely taken one of their dearest servant along with them. So that is very sweet, happy occasion. But at the same time, it is very painful that such wonderful devotee, Anadi Jagannath Prabhu, is not with us physically today. For personally, for us, our family, me, Rasmai, and of course Chatur, and plus our extended family, it's a huge loss. Prabhu lived for 42 years. First 20 years, first 10 years, 15 years, they were with their parents in Similiguda, Koraput. Then he came out to study. Then for next 5 years, he was again studying. So up to 2021, for 5-6 years, he was away from the family. Then he joined our Krishna conscious family, which is a great thing, wonderful thing. So first 15 years, he was with the great lineage, known, well-known family from Odisha. Our Krishna Singh Prabhu, well-known in their literary circle, also as a freedom fighter. A wonderful family, wonderful mother, sisters, brother-in-law. I see Samhita also today. So the next 15 years, Anadi Jagannath Prabhu was with us closely. Of course, I would say 20 years. The next 5 years, for a higher cause, Jagannath Prabhu went to Jagannath Mandir within Bangalore to achieve a higher purpose, which is few can understand. So, if I have to summarize this 20 years of relationship, I really don't know where to start and where to end. So, and for us, for me, Anadi Jagannath Prabhu was very, very special. I could share some of very confidential things with him. He's like a vault. I don't know how many of my family members understand. I'm sure that Mataji would understand. Anything goes to his heart, never comes out. He's like a vault. And I had to face many difficulties in my Krishna conscious preaching and so many activities. And he understands. And also, sometimes people used to joke that I'm the doctor, he's the compounder. So all the difficult patients come to us. And the easy patients go to others, and the most difficult one comes to us. So we have to battle with that for years to set them all right in Krishna consciousness. That's our responsibility. So I can talk, I can write about every individual devotee whom we brought up in Bangalore or even outside. We were involved. So it's not a simple life of Krishna conscious that Anadi Jagannath Prabhu completed. I would certainly speak more, but if I start speaking, I would take the entire time. And I know I can guarantee you, because I have so much to speak, share. But I know there are many people, many devotees who love him so much, have given their names. So I would like all of them to speak. Then I will
narrate some of the wonderful things what we had shared for many years. He was very serious Krishna conscious person when it comes to Krishna consciousness, and very jovial. Some of the Rasmai says that always you and Jagannath only understand your PJs. So we had a lot of lighter times. Only both of us will be laughing, others will be just staring us at why we are laughing. So there are many times like that. So I certainly miss him for that. And of course, a lot of preaching expedition, a lot of picnics, so many things we have done. And after taking up some responsibility in Jagannath Mandir, I'm sure that Guru Maharaj will be pleased with that effort, that he is transformed, because there's many things that what we could not achieve because of Bangalore legacy issues. Somehow Anadi Jagannath Prabhu could achieve, which few of us understand, know. So like that, I can talk many things about Anadi Jagannath Prabhu. When it comes to he's starting from first day, I'm sure the rest of my will have something to share. It was like a real family away from family, because he wanted to go back to his family. Then he was there with us. He continued staying. All of us those young brahmacharis used to be with us, staying overnight, whole weekends there with us. There's so many wonderful things we did, and I don't know where we have recorded all that wonderful moments. It certainly is there in our heart. Of course, his preaching spirit, and he was always curious, and how he has so much love for Guru Maharaj. So we used to share many things, because I had the opportunity to serve Guru Maharaj for many years when he was away from India. So he was always curious to know that how you, as a young grahastha, you could run, do all this. And we always share this. Then one fine day, he very humbly approached, can I also get an experience like how you have undergone? And that was not a very ordinary condition when he approached, because Guru Maharaj already had stroke in 2008, and he was so much taken to his heart that how do we serve him? So he approached saying that I don't know, because Guru Maharaj himself is saying that I somehow miraculously escaped from jaws of death. So he was taking seriously that into his heart and saying that I don't know whether I'll get opportunity to serve Guru Maharaj. Can you just organize something so that I can serve him uninterruptedly? So that was the time, I remember in Hyderabad, we went for a visit. I gained some courage when I approached Guru Maharaj, saying that, look, I have Anadi Jagannath, he is a nice software engineer, he's with us. And Guru Maharaj knows he would like to, because they already decided to go to Los Angeles. So I just timed it in such a way, proposed, is it okay? And Guru Maharaj thought. We stayed for 2 days to get his signal. Third day we are supposed to leave. Till such time Guru Maharaj didn't say anything. Then finally he said, speak to Mahavara. Then I know, okay, Mahavara means okay, it's done. So that's how, that is a kind of a life-changing experience for him. And he was there with Guru Maharaj for long in Los Angeles. When he came back, his mood was completely different. And I was so glad that somebody could achieve this wonderful thing that it's not ordinarily, no one can just take it up. Because I had all those boys who are software engineers, young like him. Nobody came forward to asking me that, can I do this?
And I was also skeptical. So, what everybody would think, what parents would think. So, but then we mustered some courage and said, okay, so you are on a sabbatical, just go and come back. And that was a life-changing experience, and his love for Guru was increased so much. And he came back and he was taking up so much of responsibility for preaching. Everything happened. So that part one, I stop here and for the rest of them to speak. But as I said, I can continue to speak continuously for next 2 hours. As I said, once I start, I can't stop, but I have to force myself to stop here. I let Vishweshwar go and Prabhu take over and just let so many eager devotees, loving devotees would like to speak something about from their heart about Anadi Jagannath Prabhu. So I let them speak. And if Vishweshwar Prabhu give me more time, certainly I would like to speak more. Anadi Jagannath Prabhu ki, Srila Gurudeva ki. Thank you very much, Prabhu. So we will start with a list of devotees who have expressed their interest to speak about their experiences with Anadi Jagannath Prabhu. So I have a list of names. We will try to, we request all the devotees who come here to speak to just restrict their talk to just about 3 to 3.5 minutes, maximum 4 minutes, so that we hear from a maximum number of devotees, because as Prabhu said, lots of devotees would like to speak, but we would like to give some time to all the devotees. So it's a humble request that anyone who is coming over here, just restrict yourself to just about 3 to 4 minutes from your side, please. Yeah, thank you very much for your kind. मैं हिंदी में भी इसका अनुवाद करूंगा. अभी प्रभु के बात के बाद अभी जो हमने कुछ भक्तों का नाम लिखा है और उनसे पूछा भी है कि वो जगन्नाथ प्रभु जी के बारे में कुछ ग्लोरीफाई करना चाहेंगे, तो उनसे मैं अभी निवेदन करूंगा, एक एक करके उनका नाम पढ़ूंगा. उनसे निवेदन है कि उनका जो टॉक है, बात है, उसको सिर्फ 3 या 3.5 मिनट के अंदर खत्म कर दें प्लीज, ताकि हम जितने हो सके उतने ज्यादा भक्तों से आज सुन सकेंगे प्लीज. ठीक है, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिज ग्रेस विजय गौरव प्रभु टू प्लीज कम एंड शेयर हिज थॉट्स प्लीज. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मदन मोहन प्रभु टू फॉलो आफ्टर दैट, सो काइंडली बी रेडी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्धशलाकया ज्ञातुमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hare Krishna, just to intercept. So Vijay Gaura Prabhu and Anadi Jagannath Prabhu are the first one from our yatra to get initiated in 2005. So after we started preaching for many years, we got clearance for recommendation. So Anadi Jagannath Prabhu, Vijay Gaura Prabhu and Vrindavan Sham Prabhu, Paramnitai. So 4 of them took as a first batch of initiation in 2005. So they have a special relationship, taking both on the same day, spiritual birth. So it's very difficult, very heavy heart to say about my good friend. First I met, we both were the BV members of Param Nitai Prabhu class together. And we have a very long journey, around 20 years I was with him. It's already 20th year. So we are closely under the guidance of His Grace Avatari Prabhu and Rasmai Mataji, Her Grace Rasmai Mataji. He is very caring and loving to whoever devotees he sees. So any service which has been provided to Anadi Jagannath Prabhu, it is confirmed that the services get completed. So whenever I see him, I used to fight with him, you take care of your health. Once what happened, he was been troubled with pancreas, some issue in Colombo, Asia.
I was just fighting with him. Why you are not taking away health? Even Gurudev has said, you take off your body. That is also very important. Because I have to quote the Gurudev's words, otherwise you will never listen to me words. When we got initiated in the year 2005, myself, Jagannath Prabhu, everyone were there. Prabhu was telling, Guru Maharaj was telling, these are the bright phases. These are the bright phases. And Gurudev asked me and Jagannath Prabhu, what is the name you are looking for? He was telling, I want something in the Leela of Jagannath Leela. So only got the Anadi Jagannath Das. So I told I want in the name of Gaura Leela. So that is the places we started the relationship together. And myself and Prabhu used to go for all the preaching areas, Baswesha Nagar, Seva Nagar, all of the places, whichever we are been told, we used to go together. And the first preaching service we did in Ragigoda. So after his infi activity, after his office was, by both of them used to go around 8 o'clock or 8 o'clock. That was the preaching service first we used to do together. And he was very loving. Until I have take prasadam at ashram, he never used to leave me. Because my way of is to that, I to serve, I used to never take prasadam at ashram. He was forcing me and he was telling, hey, this guy never takes prasadam at ashram. He was so loving. So that love and care helps me to accept his words sometimes. Very difficult, very difficult. And whenever the yatra, we used to go for Puri Jagannath, we used to go for, yearly we used to have a yatra to Mayapur, all those things. And he makes sure each and every devotee has his accommodation fit and fine. Until that, he never goes for sleep. That was the dedication he used to have for the devotees. And many times, the people who want to, any medical emergency or anything, used to run like anything. And even I have heard that his parents are not keeping well, he used to run to Orissa, sometimes he used to run to Chennai, Lopamutra Mataji's house. Hey, child has born, I want to go. He used to run. He used to care family side. The love and care he used to have for everyone. So whatever the extension programs used to have, Sunday programs, everyone, even a small child or to the bigger one, everyone used to love and care them. So what is the thing you require? How can I help you? How can I serve you? And used to sing very nice Vaishnava Kirtans. So every time I try to support him, if any local issue, anything, because I'm a localite from Bangalore, if any issue comes up, he calls me, hey, this is the how can I get it cleared? So that stuff I used to have. So, and any discussion has to discuss. Prabhu also, once I was not keeping well, so he only took me to the hospital and he supported me very well. I was in few months, I was not keeping well mentally. So each and every moment I can realize that how he was supporting, and both were together for a longer time. So every time he was in Guru consciousness, every time how to serve Guru and how to serve senior Vaishnavas. It's a very, very, very heavy heart for me. So, and he has many times, he has gone to the hospitals, people who are going to leave the body, he has gone there and held them to chant Hare Krishna, Mataji and Jagannath Prabhu, so that they can go back to the God. So all these wonderful activities, wonderful services he has done, it is not forgettable. It's in my heart, even in every moment. So it's really heavy heart to speak about my good friend, but I like to speak. So it's really very difficult. So Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatrubhyasa kripa sindhubhyevacha patinam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you. Hare Krishna. Anadi Jagannath Prabhu ki. Yeah, Madan Mohan Prabhu. Thank you, Prabhu. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. अनादि जगन्नाथ प्रभु की जय. हरे कृष्ण सभी को. अनादि जगन्नाथ प्रभु के साथ तकरीबन मैंने 15 साल गुजारा.
समय की पाबंदी के कारण मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए था, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं कुछ कहूंगा ताकि मैं अपने हृदय को संतोष दे सकता हूं और मेरे को खुशी का भी एहसास कर सकता हूं। एक एक घटना मेरे को याद आता है। 2008 में नया मैं कृष्ण कॉन्शियस ज्वाइन किया था। उस समय प्रभु ब्रह्मचारी आश्रम में हमारा घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। हम लोगों को कैसे अपना निद्रा, तंद्रा, आलस्य त्याग कर करके कृष्ण भक्ति में आना शिक्षा देने के लिए 20 किलोमीटर दूर से आर्मी एरिया में मंगल आरती करने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, अंधेरा छाया हुआ है, लाइट नहीं है। जगन्नाथ प्रभु 20 किलोमीटर दूर से मंगल आरती के लिए आ गए। अंधेरा देख करके कुत्ते उनके पीछे पड़ गए। 2 व्हीलर में आए थे, गिर गए, खून खराबी हो गया, किसी को बताया नहीं, छुपाते हुए मंगल आरती अटेंड किए। मंगल आरती खत्म होने के बाद फिर बाद में उसको साफ करना, उसको ध्यान आया हम कर रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम कह रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी में उतार के दिखाते थे हमको सीखने के लिए। दूसरा एक दिन बात है, मैं सोचा मंगल आरती में आएंगे नहीं, अभी प्रभु ज्यादा नुकसान हो गया। दूसरा दिन फिर मंगल आरती में सही समय में खड़े हो गए। तो मेरा सोच बहुत नीचे था और उनका कृष्ण भक्ति बहुत ऊंचा था, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। 2009 की बात है, दिल्ली से मैं आर्मी में से छुट्टी आया था। प्रभु मंगल आरती में बिना बताए आ गए। मंगल आरती खत्म हुआ, भगवान की विग्रह के सामने खड़ा होकर करके तो उन्होंने अपना जेब से कंठी माला निकाले और मेरे गले में लगा दिए। मेरी पत्नी ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किए, ये तो फौज में है, प्रसाद के बंदोबस्त कैसे होगा? माँ जी, वो शुभ दिन कब आएगा? दिन को हम शुभ बनाना, ना कि शुभ दिन हमारे लिए आएगा। मनुष्य जीवन का क्या पता है, कोई भरोसा नहीं है। और प्रभु तो आर्मी में है, बहुत जोखिम की जिंदगी जीते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान देखेगा, सब बंदोबस्त कर देगा। उनका मुंह से निकली हुई बात वही हुआ, भगवान ने सब बंदोबस्त कर दिए। एक बार एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं प्रभु के साथ जा रहा था। दोनों 2 व्हीलर में थे, आउटर रिंग रोड में जा रहे थे। सर्विस रोड में गए, उनका बाइक फिसल गया, गिर गए, खून निकल रहा है। नजदीक में किसी को टेलीफोन किए, कार लेकर आया। प्रभु ने बताया, कोई लोग देखेंगे, उनकी ध्यान मेरे खून की तरफ जाएगा, उसको ढक लिए, छुपा लिए। हॉस्पिटल नहीं गए, प्रोग्राम गए, प्रोग्राम अटेंड किए, उसके बाद हॉस्पिटल गए। ये सब हमको सीखना चाहिए। कोलंबिया हॉस्पिटल में, कोलंबिया एसपीएटले एयरपोर्ट रोड में एक बार प्रभु को बहुत ज्यादा स्टोमक पेन हुआ। रात को 3 बजे मेरे लिए मैसेज छोड़े कि प्रभु ये मैसेज देखते ही वृंदा को कॉल करना। भगवान की क्या अरेंजमेंट, 3:05 पर मेरा नींद खुल गया। मैं देख रहा हूं जगन्नाथ प्रभु का मैसेज है। इमीडिएटली जैसे लिखा था, माता जी को कॉल किया, प्रभु बहुत सीरियस है, कोलंबिया हॉस्पिटल। मैं सीनियर भक्तों को कॉल किया, बारिश हो रहा था, वहां पर पहुंच गए। वहां पर उनके जो साथ मिला, जो मैंने सीखा, तो अलग से बुला करके प्रभु मुझे कह रहे हैं कि मदन मोहन प्रभु अब ऐसे हैं कि अगर मेरा ये अंत समय होगा, मेरे गुरु भाई भक्तों के सिवा मेरा शरीर को कोई टच नहीं करना चाहिए। और यहाँ हरि नाम का जो धुन मशीन बज रहा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। भक्त लोगों ने फ्रूट लेके आके वहां फ्रूट जमा हो गया। अलग से बुला के पूछ रहे हैं कि प्रभु भक्त लोग कितने दूर से आ रहे हैं, ये फ्रूट इकट्ठा हो रहा है, उनको बांट दीजिए। मैं सोच रहा था ये फ्रूट उनके लिए आया या जगन्नाथ प्रभु हमको बांटने के लिए दे रहे हैं। एक दिन की बात है, मैंने आर्मी क्वार्टर में था, मेरे घर में अल्टर नहीं था। दीवार में छोटे छोटे सेल्फ बनाते हैं सामान रखने के लिए, भगवान के फोटो को रख करके पूजा कर रहे थे। बड़ा प्यार से सब चले गए,
आके मेरे को बता रहे, प्रभु भगवान के लिए कि ऊंचा स्थान देना चाहिए, बुरा नहीं मानेंगे, एक अल्टर बनाना है। अल्टर बनाना है, कैसे बनाना है? किसी भक्त से अल्टर बनाए, भक्त के लिए बनाए और भगवान के लिए बनाए। तो मैंने वो सब सोच रहा था कि किसको इस्तेमाल करना, किस काम के लिए इस्तेमाल करना, पैसा कैसे इस्तेमाल करना, ये अगर कोई सीखे तो उनसे, वो मेरे लिए एक उदाहरण थे। छोटे छोटे चीजें बारीक से मैं उनके साथ बिताता था और ये नोट करते जाता था। शादी की उनको समय आया, मेरे को सुयोग मिला कि उनके शादी अटेंड करने के लिए, और वो जगह चुना गया मायापुर नवद्वीप धाम। कोई मंडप चुनता है शादी के लिए, लेकिन उन्होंने चुने मायापुर नवद्वीप धाम। मैंने वहां गया था। ओडिशा से उनका सगा संबंधी दोस्त काफी लोग आए थे। उन्होंने मुझे को बताए कि प्रभु मैं भक्त लोगों की देखभाल करता हूं, आप इनका देखभाल कीजिए। आप सोचिए, अपने माँ बाप का, सगा संबंधी का, दोस्त का हम देखभाल करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किए, मेरे को दगा दिए उनको देखभाल करने के लिए और खुद भक्तों के देखभाल किए। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट उन्होंने बताए कि उन्होंने मेरे को समझे, गांव का लड़का बेटा, ये है कोई भांजा और वैष्णव अपराध करेंगे, उनसे वैष्णव अपराध होने नहीं देंगे और हम बच भी जाएंगे, सेवा भी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। एक दिन की बात है, सॉरी मैं कुछ समय ले लिया, अभी एक ही शब्द करके खत्म कर दूंगा। तो एक ही बस, ये क्या हुआ, एक दिन रात को 10:30 बजे की बात है, प्रभु ने रिंग किए। मैंने सोचा तो इससे क्या है, तो प्रभु ने बोले कि कल सुबह बहुत जल्दी फ्लाइट है और मैं गांव जा रहा हूं, जगन्नाथ के लिए एक ड्रेस चाहिए, माताजी सिलाई करता है, वो लेने के लिए आ गए और जगन्नाथ के लिए लेके गए। 5-6 साल गुजर गया, अभी मेरा गृह प्रवेश हुआ जगन्नाथ के लिए हमारा, तो उन्होंने ड्रेस सिलाई करके ऑर्नामेंट लेकर के आ गए, लेकिन मैं जगन्नाथ को पहनाने से पहले वो चल दिए। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा समय लिया, माफ करिए। जगन्नाथ प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु। मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से कि जितना हो सके कम बात कीजिए। हम सभी लोग इतना कुछ जानते हैं जगन्नाथ प्रभु के बारे में कि घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी भक्त हैं, ऐसा ना हो कि उनको चांस ही ना मिले। सो सभी भक्तों से निवेदन है, सिर्फ 4 मिनट के लिए बात करें प्लीज। या थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई रिक्वेस्ट वैष्णव निताय प्रभु टू प्लीज कम एंड शेयर हिज वर्ड्स। यू कैन स्टार्ट। अनंत कोटि वैष्णव, नहीं कृष्णा, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Bond, but it's more than a decade of relationship. So it's trying my best to at least share some of the highlights. I don't know, in the year 2006, when I happened to get into the process of Krishna consciousness, he was there in the same base ashram where we lived together. There our story began, actually, I would say. Even till last week, the story was very much on and we were having a very good, wonderful memories. When I think of this, actually in the 2006, all that I felt was one family, and I have a brother who was born on the same month as Anadi Jagannath Prabhu was born. So I didn't feel that I was missing him. It was a home away from home. He was always been my elder brother in many ways.
And we also very categorically remember it used to be an ashram where Prabhu's parents used to come, and mother used to actually help. In those days we were not so equipped even with cooking. They used to help us in cooking in the brahmacharya ashram to some extent, and they grew up together. Like Sittu used to come, and then Rajiv Prabhu, Lopa Mataji, they were all, we all used to together. My parents used to come, their parents used to come in the same ashram. We used to, only parents were allowed. So, and the immediate siblings were allowed. So that's how we were growing up together like one family. And one thing, as we moved out in our Krishna conscious ladder and we kept on doing some preaching activity, one thing which stand out as, you know, his helping heart, and he used to always tell me few things about, I am not so prompt with respect to wishing people on their birthday or remembering on their anniversaries and all that. I am not so prompt, but he used to very diligently remember all this, and he used to always tell me that, you know, how we can help devotees by, you know, sharing this very small, every single moment in their life, how we can relish support he has done in many ways. And once I remember in the maybe 2014 or some time, when I happened to meet one very, it was 2013 end, just after my marriage engagement, I happened to meet one very scary road accident, and I still remember he immediately called, and I was in a very pathetic road accident and many things happened that time, and I think he was one of the very first person to call and speak. And of course, because the neighbor, there were many devotees who reached out much earlier, but he was the one who immediately called. And there is a very special knack in him where he has a, you know, he can, if he meet a person even one time, he will ensure that they remember him for rest of their life. That was a very special knack, and it's very, very special blessing, which is not worth even comprehending to, you know, imitate. We should just follow such Vaishnavas. So I think very one moment which I want to just share, which I can never forget, is the time when Jagannath Prabhu got married. That's a very same year I also got married, and my wife was, you know, earlier she was very dwelling about various practice of Krishna consciousness and full commitment and many such things, and he did play a vital role in you know, taking us to Guru Maharaj through the direction of Chaitanya Avtari Prabhu. And the very same day, he supported to that great extent that she took the aspiring from Guru Maharaj. I think maybe Vrinda Mataji may remember this. So this, in fact, I was dwelling, and Chaitanya Avtari Prabhu was not with me at that time many times to consult. I was dwelling whether to do it, not do it. She's really ready for it and many things. But he just literally dragged me and took me to the place, and it's, you know, many things to say. I think
These are some of the things that I could recollect. And when I happened to hear this actually at 7:30 a.m. on the last Sunday morning, I was in the very same temple we are having the Darshanati. I was getting a call from Rajiv Prabhu, and I was a bit clueless. And the very moment I saw the call and Rasmai Mataji, I generally don't see her with choked up throats or, in the verge to cry. She was very much in a verge to cry, and she was saying, I heard some news, I just want you to go and attend to this immediately. It was, I could, that's when very moment I told Rajiv Prabhu, just give me 5 minutes. I also heard this news just few minutes before. I am not able to assimilate it. But I will just get back to you and then tell you the details. Then I have to speak to few devotees on the ground just to go before I could reach there. Then in the en route, we got the confirmation with the details of the ID card and many things, which was very, very devastating. Yeah. And I didn't want to cry as I reached there because there was some amount of responsibility on my shoulders. I just wept out all possibility on the drive itself, so that I'm mentally strong enough. Last few words. Vaishnavas may physically leave this world, but Vaishnava's glories will never die. And I'm sure he is very much with us. His glories are not going to die, and it's going to always shine for a good amount of time. And I think we all have been witnessing his role model leadership, and we should try to follow the best of his qualities and help many and many souls to take up Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you, Vaishnav Prabhu. Now I would like to invite Her Grace Vijay Bhakti Mataji to come and please speak, please. Next will be Ishani Mataji. आप तैयार रहिए please. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. जगन्नाथ प्रभु की जय. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸಾರದ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಡಿವೋಟಿ ಸೇವೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಡಿವೋಟಿ ಸೇವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೂನು ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಇನ್ನು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗುರುಗೆ 2 ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪು ಸೇವೆ, ವಾಣಿ ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲಾರುನು ವಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೂನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂನು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆತರ ಆದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ವಾಣಿ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪು ಸೇವೆನೆ 2 ಸೇವೆನೂ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ತರ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಾಗ 15 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಬಂದು ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಬಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 ನಿಮಿಷ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ತರ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. Thank you, Mataji. Ishani Mataji. Next, Aprameya Prabhu. One of you. Next. जगन्नाथ प्रभु की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ. आदरे जगन्नाथ प्रभु का बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनका वर्णन करने के लिए। फिर भी मैं अपना दिल से जो मैंने उनके अंदर देखा है वो 2 मिनट में जितना हो सकता बोलने का कोशिश करूंगी। हम आर्मी में मुझे हिंदी बात करना थोड़ा थोड़ा आता था, एक लास्ट चांस है। तो बड़े प्रभु ने बोला है वहां पे 2 भक्त लोग हैं, वो लोग शिवाजी नगर में आ जाएंगे, तो वहां पे जाके करने का जगह कहीं और दूसरे जगह पे भी टाइम दे सकते हैं करके। तो एक वहां सभी माताजी से, तो आप एक बार जाके कोशिश करना करके। मैं बोला प्रभु मैं खुद भी नया हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो बोले सतकीर्ति माताजी को साथ में लेके जाओ, वो नामामृता पढ़ के कुछ समझाएगी आपको। वो इंग्लिश में है नामामृता, हिंदी में नहीं है, कन्नड़ा में भी नहीं है। वो बोले सतकीर्ति पढ़ के आपको समझा देगी, आप उसको हिंदी में बोल देना। तो पूरा रास्ता हम लोग वो नामामृता में पढ़ के वो मेरे को समझा के लेके जाती। तो मैं कोशिश करती जितना मैं समझा वो बोलने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने थोड़ा हिंदी भी अच्छे से बोलना और पढ़ना सीख लिया है उनकी दया से। और जब क्लास में आने के बाद मैं बाला प्रभु या नहीं तो उनको बोलती आज क्या हुआ कैसे हुआ, हाँ ऐसे ही होता है, तो सब लोग हमारे जैसे ही हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग
ये हरि नाम में इतना शक्ति है, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। तो आप हरि नाम का महिमा गा रहे हो, उधर जाके बोल रहे हो, तो एक दिन सभी लोग इसको समझेंगे। तो आप अपना तरफ से बस अपना शुद्धि के लिए जाके हरि नाम का प्रचार करो। तो उनका वो उत्साह और माता जी प्रभु का आशीर्वाद से मैं कुछ अगर कृष्णा का बारे में 2 शब्द किसी को बोल पाती हूँ तो इन्हीं लोगों का अपार करुणा दया है। और जगन्नाथ प्रभु का अंदर ये गुण क्या था, वो कभी भी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, नहीं तो कहीं भी मिलेंगे, वो पहला प्रश्न उनका शब्द यही होता था, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ और कैसे हो, सब ठीक ठाक है। और घर का सभी सदस्यों को वो पूछेंगे, सूरज नहीं है फिर भी उसका बारे में हमेशा पूछेंगे। तो अभी रिसेंटली पिछले साल हमारा प्रभु का कुछ प्रॉब्लम, मतलब बीपी ज्यादा होके रमैया में एडमिट किया था। और बड़े प्रभु ने रात को 12-1 बजे अमेरिका का डॉक्टर से बात करके पूरा सब कुछ उनको क्या करना है, कैसे करना है करके सलाह दिया। डरने का नहीं है, भगवान है, बस सेवा करो, उनका नाम लेके उनको जो जो चाहिए वो करो, घर मत लेके आना। पर हमें किसी को मंदिर में, हॉस्पिटल में आने के लिए सभी को मना किया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा कोरोना का वो था, कोई भी नहीं आना है, उधर नहीं छोड़ते करके। तो जगन्नाथ प्रभु को पता चलता तो वो जरूर आते, हम उनको बताए ही नहीं। जैसे प्रभु घर आए दूसरे दिन वो घर में आ गए, बोल रहे मुझको अपना नहीं समझा, मेरे घर का बाजू में ही रमैया हॉस्पिटल है, तो मुझे नहीं बताया, आके इतना दूर से बेटा को बुलाया, मुझको अपना नहीं समझा करके बहुत मतलब डांट के गए। तो क्या बोलूं मैं, उनको खोया है, नहीं बोल सकते। उनकी वजह से हमने बहुत कुछ पाया है, खोया कुछ भी नहीं है, कृष्णा को पाया है, भक्तों का संग और भक्तों का सेवा कैसे करना है उनसे सीखा है। कोई भी उनके लिए उनको खोया है हम नहीं समझ सकते, उनका एक एक वाणी में हम नया जीवन पा सकते हैं। जगन्नाथ प्रभु की जय। Thank you, Bala Prabhu, please. हरे कृष्णा। जगन्नाथ प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, दोस्त, एक गाइड, गुरु भाई, सभी जगन्नाथ प्रभु हुआ करते थे। उनके साथ कम से कम एक 18 साल का रिश्ता अभी तक बना। अभी भी मुझे याद है कि पहला दिन जब आश्रम में पहला दिन जब मैं ज्वाइन किया था, तो सबसे पहला आइटम मैंने जो सीखा था उनसे वो था दालमा, जो सभी बहुत फेमस, उनको बहुत पसंद था और वही बना गए थे और मैं देख रहा था कि कैसे बनता है। और दीक्षा होने के बाद जब हम लोग चैतन्य होता कि प्रभु से जब ट्रेनिंग ले गए थे, तो मैं भी नया था और जगन्नाथ प्रभु भी नए थे कुकिंग में, रसोई में। हम दोनों ने मिलके बहुत सारे आइटम सब जलाया था, खासकर जो सबसे सिंपल आइटम सभी है, खिचड़ी जो भी है हम जला। और किसी तरह से हम लोग ऑफरिंग कर देते थे। ऑफरिंग करने के बाद जो भी भक्त उसको खाते थे बोलते थे वाह प्रभु बहुत अच्छा बना है, कैसे बना है, ऐसे करके रेसिपी भी पूछते थे। हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, हम दोनों ने मिलके जलाया करके। तो ऐसे बहुत ही मीठा उनके साथ समय जो बीता है उनके साथ, हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगे, हमेशा उनको याद में रखेंगे। बहुत सारे बहुत उनके साथ बहुत अच्छा गुण है। अगर जो आप सभी ने जो बताया
कि बहुत ही करुणामयी हुआ करते थे। बहुत ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों के लिए, जो बाहर भी है उनके लिए भी उनका हृदय जो था बहुत ही बड़ा था। एक दिन मैं जगन्नाथ प्रभु कहीं किसी एरिया में प्रचार करके हम लोग रात को लगभग 9 बजे को जब हम लोग शिवाजी नगर से आ गए थे, महालक्ष्मी लेआउट में हमारा आश्रम था तब, तो जब उस समय आ गए थे तो हमारे सामने एक तभी है ना एक एक्सीडेंट हो गया था उस समय, और इमीडिएटली मैं तो इतना शॉक हो गया था कि मेरे हाथ पांव एकदम कांप रहे थे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं बस, क्योंकि उसके शरीर से इतना खून निकल रहा था, लेकिन जगन्नाथ प्रभु जो है तुरंत उसको इशारा किया, दोनों ने मिलकर उनको ऑटो में डाला, अपना गाड़ी साइड में डाल के उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए, फर्स्ट एड दिया, और तुरंत उनके फोन से हमने उनके रिश्तेदार को बुलाया, और जब तक रिश्तेदार नहीं आए तब तक हम लोग, जगन्नाथ प्रभु ने बोला कि हमको यहीं पर रहना चाहिए। लगभग 10 बज गया था, उसके बाद हम लोग आए। और वैसे ही एक दिन हम लोग आश्रम में हम सभी थे, जगन्नाथ प्रभु काफी लेट आए थे आश्रम में। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का भी है ना ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट हो गया था, और मैं एनिमल जो रेस्क्यू टीम है उनको मैं बुलाकर उसको हवाले कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, सभी जीवों के लिए उनके प्रति उनका हृदय जो था बहुत ही विशाल था। और मैंने अभी इतने सालों में मैंने कभी भी उनको किसी दूसरे वैष्णव भक्त के बारे में कभी भी निंदा करते हुए कभी नहीं देखा। सो एक बहुत एक अच्छा एक क्वालिटी है जो हम लोग उनसे इम्बाइब कर सकते हैं। और हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जगन्नाथ प्रभु जब भी किसी भक्त से मिलते थे तो वो हमको आके कहते थे कि उस भक्त का ये वाला गुण कितना अच्छा है, हम लोगों को उनसे ये सीखना चाहिए। शायद उस भक्त में एक अच्छा क्वालिटी होगा, 99% है ना उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो हमेशा जो एक अच्छा क्वालिटी है बस उसी का गुणगान करते थे। सो सभी आचार्य लोग भी हमको भी लिखा है कि डिवोटीज केयर, है ना। अभी भी याद है जब जगन्नाथ प्रभु वृंदा माता जी का शादी के समय पर भी हम लोग जब मायापुर में थे तब कुछ रूम एलोकेशन है ना, कुछ भक्त लोग इस जगह से दूसरे रूम में शिफ्ट होना चाहते थे, और शादी के 1 घंटे पहले भी वो बैठ के बस रूम एलोकेशन कर गए। और हम लोगों को फिक्र हो गया कि भाई शादी आपका है, आपको करना है, और जल्दी से तैयार हो जाइए। तभी वो अपने बारे में ना सोचकर कैसे वैष्णव भक्तों का सेवा करना है उसके बारे में हमेशा उनका है ना, हमेशा वही उनके चेतना में थी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगन्नाथ प्रभु की। थैंक यू वेरी मच बाला प्रभु। अप्रमेय प्रभु प्लीज। अनादि जगन्नाथ प्रभु की जय। अनादि प्रभु जगन्नाथ प्रभु जी मुझे अनादि जगन्नाथ प्रभु जी हम लोग को मुझे 20 साल से जानते हैं। शुरू में वो बहुत जगह में मतलब इधर उधर शिफ्ट करना था, क्योंकि एक ही जगह में जैसा भी हम लोग बैठे हुए एक ही जगह वैसे टेम्पल नहीं मिला, तो बहुत जगह में इधर उधर प्रचार करके हम लोगों को इतना
आगे लाया। लेकिन जगन्नाथ प्रभु हमारा परिवार का एक हमारा बच्चे के जैसा मिलजुल के था। जब भी प्रभु को कुछ आप इसमें कुछ आने के टाइम देर हो गया तो कुछ प्रसाद चाहिए तो ब्रजा माता जी को फोन करेगा तो प्रभु फ्री होने से थोड़ा प्रसाद बना के भेज सकते हैं करके रिक्वेस्ट में बताएगा। वैसे ही प्रभु का जो भी अभी मतलब इतना हम लोग बढ़ के आए हैं कारण जब जो प्रभु लोग मतलब उसी टाइम पर कन्हैया प्रभु था, परम प्रभु था, विजय गौरव प्रभु, बहुत प्रभु लोग मिलके हम लोग को क्लास हम लोग को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया, पढ़ाई किया। तो इससे हम प्रभु से हम लोगों को सीखने का बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब प्रभु छोटे बच्चे से बड़े प्रभु लोग तक कैसा उन लोगों से मिलाप करना, मिलना जुलना, उनका कैसे पढ़ाई करना करके तरीके से हम लोग को बताकर आगे कर रहे थे। प्रभु जी जो छोटे बच्चे से गुरु महाराज तक इतना सेवा करते थे। जब भी गुरु महाराज स्ट्रोक होके अमेरिका हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो प्रभु अनादि प्रभु जी जाकर उनको पूरा सेवा करके पाद सेवा करके उनको जल्दी अच्छा होने के लिए प्रार्थना करके ऐसे सेवा किया था। ऐसे हम लोग भी ऐसे गुरु को भक्तों को सेवा करने के लिए हम लोग को दिल होना चाहिए। तो हमेशा मैं प्रभु जी ऐसा एक्सीडेंट होने से 2 दिन पहले भी मेरा सपने में आए थे लेकिन कुछ नहीं बताया, ऐसा मालूम नहीं हुआ। इससे पहले भी अवतार प्रभु माता जी कोई बड़े बड़े प्रभु भी सपने में आते थे, कुछ ना कुछ हम लोग को ब्लेसिंग मिलते थे। लेकिन जगन्नाथ प्रभु आए कुछ नहीं बोला, बैठ के ऐसे निकल गया। अब मेरा फैमिली माता जी को भी बताया अब जगन्नाथ प्रभु आए थे, कुछ नहीं बोला है, क्या पता नहीं है करके। 2 दिन के बाद ऐसी दुख मिला है, वो दुख को संभालना हरे कृष्णा। Please be seated, Mataji. He is very simple, always jovial. I feel I am very fortunate to have had his association. He is not only my god brother, but my dear friend too. Wherever I see that I got an opportunity to stay with him in the hospital. First 2 days, lot of things came to him.
Another day, the doctor came and said, "This many visitors may cause an infection, so better to avoid." And they had told the security not to allow anyone. Then I was so surprised to see when devotees came to see him, he got up and went out to see them because they would not allow anyone inside. I was taken back to see this wonderful attitude. I asked him to why he is doing this. He said that the devotees have come to see me with so much love. How can they leave being disappointed? Any festival we celebrate, he would be the last devotee to have prasadam after seeing to it that all devotees are fed. Once Nalotam Prabhu's mother shared with me that Anadi Prabhu had not slept 3 days continuously while serving Gurudev. He always carries Guru Maharaj consciousness. Any activity he does, he thinks in that way. Every time I meet him, even before I ask him to how he is doing, he would ask first. He always loved to serve devotees, and his departure also is glorious. He left this material world while in this service. I want to take this opportunity to beg at his lotus feet to bless me with Guru Bhakti, making my devotee relationship more sweet like him. Thank you. Anadi Jagannath Prabhu ki Jai. Om Madhyana Timirandasya Jnananjanashalakya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyacha Patitanam Bhaknebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. First of all, I'd like to thank Her Grace Shanti Rupa Mataji and all the assembled Vaishnavas for giving this opportunity to share a few words about His Grace Anadi Jagannath Prabhu. Basically, myself and my husband, and we are from London. We are doing a Bhakti Diksha East London under the guidance of our Grace Mataji. And we came to know a year back through her Grace Shanti Rupa Mataji about this Gita Dhyan program. And we are so fortunate to get the association of His Grace Anadi Jagannath Prabhu and his wonderful wife Vrinda Mataji. And Prabhu has been such a great inspiration for all the devotees in our community, in our Bhakti Vriksha. I would say that he is an amazing leader, a lot of patience, a lot of tolerance, and the mood of serving Guru Maharaj, in so dedicated manner. We could see that when we got this personal interaction with him, how organized he was, and how serious he was in Krishna consciousness, and how compassionate he wanted to give this message of Bhagavad Gita to reach out to so many people, all over the world. Krishna himself says in the Bhagavad Gita that those who share this message to everyone is the most dearest. And we could see that His Grace Anadi Jagannath Prabhu is very dearest to Lord Krishna and Guru Maharaj. And we felt that he was so friendly, very warm, though he was a very senior devotee, but very down to earth, even to the very new people, to the potential new leaders. He was very, very kind and empowering them. What touched me the most was when we asked him, generally we see anyone doing any course,
they keep the very senior most people to do the program, so that many people will turn up and they will take it forward. But we asked His Grace Anadi Jagannath Prabhu, we could see that the programs what you're doing in the Gita Gyan, I could see many of the new devotees are the facilitators. What is the reason for that? So then he gave a very wonderful answer. He was saying that the reason I wanted to put all the new devotees, I mean, upcoming devotees or upcoming leaders, because this gives them an opportunity to become leaders in the future. And in that way, many they can become facilitators and leaders, and in turn, they can actually share this message to many more people. In that way, it is like a lot of people can be reached out. If we just only depend on the senior devotees or already people who are experienced, then we are limiting ourselves. But this gives an opportunity to empower the future generations. So that is something very visionary. For an able leader, only can see have that kind of a vision, of thinking of expansion, the future expansion. And also Prabhu is very kind, very even the time difference in UK and India, Prabhu arranges a lot of follow-up meetings, and he never felt that it was inconvenient, even though he will see that it is convenient time for us, and he will take the inconvenient time. And I remember even once when we were calling him, he was in the office, and then Prabhu said that, I have a work and then I have some 2-3 meetings. And then by the time he gave time was around 11 o'clock in the night, or 11 or around 12. I was telling Prabhu, it's okay. We can do it another day because it is too late for you, and you may not get enough rest. But then he was saying, do not worry, Mataji, it's convenient for all the other devotees, and that's fine. I will take it up. So it's someone who is very amazing, and I was hearing all the wonderful glories about Prabhu today. Very heart touching. In fact, it is heartbreaking for us to miss his association. We'll be missing him so much. Not only us, our entire community, our Bhakti Vriksha devotees. It is a very great loss for us and for the all the disciples of Guru Maharaj. Such an exemplary example for all the disciples. Personally, for us, we could see his dedication and his commitment in serving Srila Guru Maharaj. And I'm very thankful to Her Grace Shanti Rupa Mataji again for connecting us to Anadi Jagannath Prabhu and Vrinda Mataji. Amazing. Both of them are so amazing. And because of them, now many of the devotees have taken up this outreach program, both adults and the kids. It's really, we are so grateful for all your time, for your guidance, your association. Definitely will be missing Prabhu so much, but we will take his words and his the great gift what he has given. We will take it forward, and yeah, our prayers again to Prabhu that he can bless us, that we can also become very sincere in serving and pleasing Srila Guru Maharaj. A lot more to say, but I can see the time constraint, and many devotees are writing, and how many hearts he has touched by his gentle, his loving nature, the devotee care, which Guru Maharaj very much wants all the disciples to take it up. I'm just ending with one point here. Sri Chaitanya Mahaprabhu said that there are many people who preach, but probably they may not, personally follow that, that etiquette. Some people are good in preaching, but probably they may not practice. But some may be good in practice, but they may not be preaching. But here is such a wonderful example for all of us, that an exemplary devotee who not only preaches but follows, walk the talk. So he will be remembered all throughout,
And as Guru Maharaj mentioned, He will be in all our hearts all the time. Thank you, Prabhu, for giving such a amazing example for us. We will surely be missing you. Please bless us. Thank you so much. Hare Krishna. His Grace Anadi Jagannath Prabhu ki jai. Hare Krishna. Prabhu, was I audible? प्रभु के बारे में कोई परिचय देने का वो नहीं है, सब उनको जानते हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। 17-18 साल से जगन्नाथ प्रभु को संपर्क में आए, उन्होंने हमें कृष्णा प्रेम देने का पूरा प्रयास किया। जगन्नाथ प्रभु के बारे में बोलने को नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि प्रभु के जो अच्छे गुण थे, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भक्त की क्या क्वालिटीज, तो प्रभु के ऊपर ये सारे गुण मैं देखती थी कि कम खाना, कम सोना, और क्या साधारण उच्च विचार। एक भक्त के लिए उनके अंदर ये सारे गुण भरे हुए थे, और ये असमय उनका जाने का ये समय नहीं था, लेकिन नियति को यही मंजूर था। माता जी, प्रभु, मम्मी पापा सामने, एक जवान बेटे का सामने से जाना बहुत दुखदायी होता है। इस भौतिक जगत में ये माया का संसार, इसमें भक्ति में आना, भगवान के बारे में जानना, ये जो भी था एक दिव्य आत्मा थी। जगन्नाथ प्रभु साधारण आत्मा नहीं, जगन्नाथ प्रभु ने कम समय में और कितना लोगों को दिल जीत लिया, यानी कि प्रभु के अंदर वो गुण भी थे कि कैसे भगवान की भक्ति की तरफ ले जाना है। और क्या कहना मुश्किल होगा, लेकिन जहां भी उनकी दिव्य आत्मा गुरु कृष्णा की कृपा से जो उनके दिल में इच्छा रही हो, उनकी पूर्ति हो, उन इच्छाओं को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी मैं जगन्नाथ प्रभु को कभी भूल नहीं पाऊंगी आजीवन। जैसे उनके विचार थे, जैसे एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको सम्मान देना, कोई भक्ति में आगे हो चाहे कोई पीछे हो, उन सबको कैसे हैंडल करना, कैसे उनको बताना। समय न निकाल पाने के कारण कुछ मेरे मन में जो बोलना था वो मन में ही रह गया। प्रभु ने एक बार माता जी प्रभु के घर में मेरे छोटे बेटे को प्रभुपाद का प्रोग्राम था, अभिषेक करने के लिए एक अभिषेक का पात्र दे दिया, इसको ज्ञान इमली लो और इसको साफ करो। वो शब्द ज्ञान, परसों मैंने ये मैसेज बताया, नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता है, जगन्नाथ प्रभु ऐसे नहीं जा सकते। एक मतलब वो फौजी आदमी है, आर्मी मैन के अंदर भी उनके शब्दों ने इतना वो जगह बना रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु के नहीं रहने से हम हमारे बीच में वो नहीं है, आत्मा से वो हमारे साथ में रहेंगे। फिर भी जहाँ भी उनकी वो शुद्ध आत्मा है उसको शांति मिले। महाराज प्रभुपाद हमेशा उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करें
और उनके पारिवारिक जनों को भी इस विपत्ति की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। जगन्नाथ से यही प्रार्थना है। अनादिकाल जगन्नाथ प्रभु की। Thank you, Mataji. हरे कृष्णा। Chidananda Prabhu, please. Next will be Adi Prabhu. Hare Krishna. Jagannath Prabhu ki. So, from when I was a small boy, more than my material friends, I always had spiritual elder brothers and more elder brothers and more elder brothers. Out of them, Jagannath Prabhu was one. So he was so wonderful with me. I never had an experience of having a blood relative elder brother because I'm not so close to relatives. I'm more into the devotee friends and all of them. So he is a classic example of how an elder brother should be for me, at least. We used to always bully each other. When I was a small guy, one thing which I used to love to do to him was tickle him. He is very ticklish. So we used to bully each other. We used to hug and wrestle and all of that. And then then in the end, he'll just hug me tightly and say, "Nicely so, Guru Guranga." He'll just bless me in his as an elder brother usually does. So he always used to take me to long drives. When suddenly he says, "I want to go to Jeevan Bivanagar, or I want to go to what is it, LNT or Spandan for some program," he'll say, "Chatur, let's go." Then he'll just put me on the bike, and then we'll go all the way down there. Then we'll have wonderful kirtan and stuff like that, and we used to come back. So we used to have such a wonderful relationship. And not only spiritual life, so because I used to not have that many material friends, I'm not interested in them, so one day I was pestering my dad saying, "I want to go play cricket, and I just want to go for a drive." And that time, Jagannath Prabhu and all of them were there. So Jagannath Prabhu said, "Do one thing, you come with me. All of us will go for a ride." So what happened? All of the Brahmachari ashram mates, all of us, we went for a long drive. And we went to a big banyan tree. I think Sukrat also was there. Sukrat and Rakesh also was there. I don't know if you remember. So all of us, we went for 2 hours continuously. We played cricket. And then we finally lost the ball. Until we lost the ball, we kept on playing. So this kind of small desires which I had, like an elder brother, he used to fulfill this thing. And then once I remember I got very bad wheezing, so I had fallen sick. That point in time, all of them had come. That time, Jagannath Prabhu, Nimaya Prabhu, all of them had come. They're bearing gifts and all that. So he is, I would say, if I definitely had an experience of having an elder brother, for sure. And one of the best elder brothers which I can ever have. And I'm just so thankful that I had him throughout my life. I mean, so far, so long. He taught me so many things. One wonderful thing which we shared was kirtan. Whenever I used to do kirtan, he used to hype me up. Come on, you can do it. He used to be the guy who hypes kirtan, and then he encouraged me for kirtan and stuff like that. So that was the time of my I was just my puberty time. I was very self-conscious. My voice is cracking. This thing is changing. But then even then he'll make me sit. It's like, let's just do some Jing Jang Kirtan. And then we used to do some wonderful Kirtan. That point in time, there used to be 2 tunes, one Vishwambar tune and one tune which he used to sing. So 1 full year in all the programs, we used to sing that tune continuously. Everywhere we go, always that tune we used to sing, and we used to have an awesome time. So I think those small things and those just enhance the relationship, and I think I had a blast with him, and I always feel cherish the relationship which I had with him. Anadi Jagannath Prabhu ki. Thank you, Prabhu. Adi Prabhu next. Next will be Om Krishna. Thank you. Hare Krishna. Anadi Prabhu Jagannath ki jai. Anadi Prabhu, when I heard first time, I heard around at 9:30 that time. It was
I don't know what was happening around me. Such a shocking moment it was. So, lot of memories to cherish with Anadi Jagannath Prabhu. Like we all married in the same year, 2014. So first myself, then Jagannath Prabhu, Vaishnav Prabhu. So and Anadi Jagannath Prabhu was my mentor, guide, and he had a very significant role in my Krishna consciousness. So and anytime I was down, you always used to support me, help me to come out of that situation. Lot of times, lot of things, he always used to guide me, used to be like my elder brother. So also many things, like we had a very cordial relation. I also had a very cordial relation with all his family members. And I used to go whenever his parents come, he used to introduce to me and things like lot of, we had a very nice, like he also used to come to our house, inquire about parents. He was so caring. So couple of qualities which I like to imbibe from him is the caringness he had. Then he was always enthusiastic. So Janmashtami is little tiring day because we fast till night, but Prabhu's energy will never drain off. He was always energetic. Even midnight also he was like, he used to enthuse all of us. And like many others, I also used to go with Prabhu for programs. Lot of things I learned from him. And always used to remind me Param Nitai Prabhu's birthday so that I'll also wish him. He was my mentor. So like this, so many memories I have with him. But that shock, the last Sunday, it was very heavy. Like till now I cannot digest that Prabhu is not with us. But every day his memories keeping me alive. So thanks. Hare Krishna. Anadi Jagannath Prabhu ki jai. हरे कृष्णा। अनादि जगन्नाथ प्रभु की जय। तो जैसे सभी लोग बोले, जगन्नाथ प्रभु के बारे में कितना बोलेंगे उतना कम है, हम नहीं बोल सकते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना मैं उनके साथ रहा और उनका संग से जो सीखने को मिला। तो जैसे अनादि प्रभु जो है अच्छा एग्जाम्पल थे, यानी जो भी वो सीखते थे या सीखा प्रभु माता जी से, गुरु महाराज से, वो एग्जैक्ट अपना जीवन में वो पालन करते थे। तो प्रभु हर समय बोलते हैं डिवोटी बोले तो बेस्ट एग्जाम्पल, प्रभु माता जी वही सिखाते। तो जगन्नाथ प्रभु एक बेस्ट एग्जाम्पल रहते थे सभी जगह। हर चीज जो है वो इतना प्यार से, और गुरु महाराज का जो मूड है उसको एग्जैक्ट जो सीनियर वैष्णव से जो सीखा है एज इट इज उन्होंने अपना जीवन में लागू किया था। तो यानी बहुत सारा चीज मेरा और जगन्नाथ प्रभु के बीच में जो है बहुत मजाक, यानी हंसी मजाक बहुत हम दोनों के साथ में होता था। तो मैं 2009 में जब नया नया आया तो बाकी सभी जो लोग थे बहुत सीनियर थे, मैं ही सबसे जूनियर था। तो प्रभु मेरे को एक बार बोला आप एक महीना के लिए आश्रम में आ जाओ। तो मैं पहली बार आश्रम में सभी ब्रह्मचारियों के साथ में रहना शुरू किया। तो उस टाइम थोड़ा दिन के बाद हम लोग मायापुर यात्रा के लिए गए। तो लगभग 200 लोग थे और यात्रा पूरा दिन इतना घुमाया हमको, इतना घुमाया, सभी घुमाया, और लास्ट में रात को लीडर का मीटिंग रखा। तो सभी लोगों से पूछा रियलाइजेशन कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके सभी लोग मेंबर लोग सभी ऐसा बोला। तो मैं नहीं आता तो वाह बहुत अच्छा है करके। और जैसे ही सभी लोग अपना अपना रूम में गए, वापस कोर ग्रुप का मीटिंग हुआ, जगन्नाथ प्रभु का आज का दिन बहुत खराब था। ये क्या इतना अच्छा बोल के तुरंत उनको खराब कैसे हो गया? नहीं और हम उसको ठीक करना है, क्या क्या आज गड़बड़ किया उसको हम ठीक करना है, और उसको अच्छा कैसे करना है। तो यानी प्रभु हर समय कैसे हम लोग और अच्छा गुरु महाराज कृष्णा, गुरु और कृष्णा का हम सेवा कर सकते हैं, वो हर समय ऐसे ही सोचते थे कैसा हम लोग बेस्ट सर्व कर सकते हैं। वो बेस्ट है के उदाहरण थे। हरे कृष्णा।
जगन्नाथ प्रभु की जय। चैत्य प्रभु। थैंक यू ओम जी। So first time I met him in Chaitanya Avatar Prabhu's house. So I was looking for some spiritual happiness. So and also somebody who can also working. So Anadi Prabhu also is working, and there are so many other devotees, youth devotees working. So I thought this is the best place because I don't know, I was not talking much English. So I studied in Kannada medium, so I don't know. So I thought this is the best place I can learn English. So and this is the opportunity. So he doesn't know anyway Kannada. He speaks Hindi and English. So that was so I started coming, and then I saw he was serving the devotees and helping in all the sevas he was doing. And in terms of serving comes, he will be there serving everybody whatever they want. He will not keep for himself. Okay, so some devotees will keep for themselves whatever item is there, nice items, right? So but Anadi Jagannath Prabhu, I never seen him taking some items for himself. So whatever is there, he will serve, and whatever is remaining, even if it is not remaining, he will be happy, and he will guide us to make some khichdi or something. So he will not be worried about so many items, all those things. So that's the best part of him, and he he talks to everyone, even kids, youth, adults, seniors. So everyone he talks, and very how to talk with how to make them friends, how to nicely bring him in Krishna conscious. So I never seen him getting too angry, and then or shouting. That's also, but I have personally experienced. I mean, if nothing happened, I will be shouting, but he will not shout. So he will say coolly he will handle. So even in office also, he was explaining one person, he doesn't know much on the work, but the management wants to remove him, but he doesn't want to remove. So he wants to protect even in the office also. So that behavior is there in the office also. So it's very rare, that quality, right? So sometimes maybe we are there in spiritually we will be taking very, very nicely, but materially we will not be so in the office. So that's a good part. And he started ice cream business also, and I think 2 locations he started, and slowly there is a loss happened. Still, his Krishna consciousness is not affected. So if some loss happened, we leave everything. Even we leave chanting also. But he continued chanting. He encouraged everyone to chant, preach also. So that's also one of the point I want to tell. So when Guru Maharaj comes, he will be there in the Guru Maharaj room. I will be hesitate to enter into the room. So if somebody tells something, I will be afraid. So but he goes straight away and doing service, and he doesn't care about prasadam. So I was worrying, by the lunch time is over, okay, I have to go for prasadam now. But he doesn't do. So so I was saying, because Guru Maharaj after eating, he will go for some other temple and giving lecture. He will go without prasada. So that's also one of the nice quality. So Chaitya Prabhu, sorry. Okay. We are running short of time. Thank you. Thank you. Now we have online devotee, Mathura Mataji from South City. We will hear her. हरे कृष्णा, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। मैं जगन्नाथ प्रभु के बारे में, जगन्नाथ प्रभु हर तस्वीर को मैं बेंगलुरु से इतना दूर रहने पर भी मेरे को एसोसिएशन मिलता था,
और सभी वैष्णवों से गुरु महाराज के पास टाइम में मेरे को सुनना मिलता था। ये बहुत कृपा है। अभी उनकी याद आती हर गुरुवार। मैं मैसेज करती थी, आज नहीं क्या क्लास पर के, तो जरूर मैसेज करते थे मुझे। उनके वजह से आज मैं थोड़ा भक्ति कर रही हूँ, उनके वजह से ही है। उन्होंने इनिशिएशन के पहले हम लोगों को ओरल क्वेश्चन सुना, पूछा, तभी मुझे तो कुछ नहीं आता था। अभी जब मैं भागवत चैतन्य चरितामृत सब पढ़ने लगी, भक्तों का सब लेक्चर सुनने, तभी लगता है वैष्णव का क्या गुण है मैं उनमें देखी हूँ। तो उनका ग्लोरिफिकेशन करना मुझे वर्ड्स है ही नहीं है, लेकिन मैं भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी 1, 2, 3 गुण उनका मुझे भी आने दो। हरे कृष्णा। Jagannath is always considered me like this, and we used to share a lot of jovial moments. And especially I remember when for any program, I used to bring my friends. He used to make sure to speak to all of them and remember their names. And even recently, when last week this incident happened, when I had put in my status that I haven't spoken to my friends for a really long time now after I left college. And when I had put their picture in my status, so all of them actually could relate back to, hey, this is Jagannath. Jagannath sir, we met him in your house when you had this function. And it was like how he could connect so well, and like one of the devotees said, he used to remember, make a point that everybody remembers him. So it was so wonderful how he used to show his love and care genuinely, not just artificially. To make sure to remember what the other devotee likes. I used to always have a fantasy for key bunches. So after that, when he went for their wedding reception to Malaysia, when he came back, he actually bought me a key bunch. So I was like, so moved. He actually remembered something like that. And we all know how he used to love key bunches. And any task that he used to give, he used to make sure that he used to connect the points to any of the Vaishnava bhajans and sing that kirtan. And so we remember very well, like when we heard some kirtan and we connect those points to that kirtan. So that was such a wonderful quality. And one thing I have observed is he never used to like to waste anything. So once I remember one of the devotees' wedding card, and in that wedding card there was a very nice drawing of Jagannath, Baladev and Subhadra. So then he came to me and he said, "Can you do me one small favor?" And then I card and make a nice tabletop frame, and I can keep it in my office on my table. And I said, yeah, sure. So I made a nice frame for him, and I had given it, and he was so happy. So like this, he used to make sure that he never wastes anything. So yeah, like he's touched all of our hearts in many different ways, and he has a special relationship with all of us. Something like One thing which comes to my mind is whether it's a child who is 4 years old or whether it's 8 years old, he is
touched everyone's heart, and he has had a relationship with each and every person, and always whenever he used to come, whenever I used to meet him, he used to always treat me so nicely, and he's always interested in how I'm doing. So even before I could ask one of the time which I spent with Jagannath and Gunda Mataji very closely was during the marriage time. We were newly engaged that time. We went to Mayapur, and then Prabhu had gone to give Guru Maharaj his wedding card. So since Prabhu Mataji were not there that time, he introduced me to Guru Maharaj for the first time. Those memories are really very interesting. My mother-in-law, she was sharing with me last week that when she got operated, she had many operations back to when she was after the operation. She was very nauseous. She had water, and she just needed to with hands, and she just held the vomit, and the mother was feeling so awkward, but I'm just trying to sure, but so as like one of the people sharing his care and his main area of devoted care, very difficult. Everybody on their place, and those memories are always there. I have so many things to learn from cherish and in my Krishna party. Thank you. Next, I would like to Sabha, 3 minutes, please. Thank you. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। सबसे पहले मैं अनादि जगन्नाथ प्रभु के चरण कमलों में सशक्त प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मेरे दाहिने साइड में बैठे हुए उनके माता पिता, जिन्होंने इतनी ग्रेट भक्त का जन्म दिया, उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे माता पिता धन्य है। उसके बाद मेरे दाहिने साइड में बैठे माता जी, उनके माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके जीवन में गुरु महाराज की कृपा से इतने ग्रेट भक्त जीवन साथी बने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनादि प्रभु कृष्णा भावनामृत के प्रचार और प्रसार में इतना उत्साही थे। प्रश्न है कि उनको ये उत्साह कहाँ से मिलता था। उनमें एक बहुत विशेष गुण था अनादि प्रभु में, वो अपने गुरु के प्रति 100% समर्पित थे और शरणागति में थे। और चूंकि गुरु की इच्छा थी कि वो प्रचार करे और अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रचार करते थे, गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रचार करते थे। बट उनके प्रचार में 2 विशेषताएं थी जो मैंने देखा। एक प्रत्ययता, जो एक जो उनका एक विशेष बात थी कि वो नहीं थी उनके अंदर। वो अपने को अच्छा कहलवाने के लिए प्रचार नहीं करते थे या अपनी प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए प्रचार नहीं करते। और दूसरी बात थी कि वो प्रचार में हमेशा प्रचार में जो है वो नित्यता थी। प्रचार करते थे और नित्य करते थे, हमेशा करते थे। वो ना कभी थकते थे ना रुकते थे। और आज उसका परिणाम है कि उन्होंने 7-8 प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है गीता। उन्होंने गीता ज्ञान के माध्यम से करीबन 300 नए भक्तों को जोड़ा है। तो गीता ज्ञान, उसका भक्ति वृक्षा, उसके बाद में भक्ति शास्त्री कोर्स, भक्ति वैभव कोर्स, नया मंदिर का उन्होंने त्रिपा सागम का नया मंदिर बनाने का उन्होंने जो किया है, कुछ वो भी हो रहा है। तो इतने सारे काम, इतने सारे नए लोगों को इस भावना में जोड़ रहे हैं। तो ये शक्ति उनको कहाँ से मिली?
कैसे उनको मिली प्रेरणा मिली। तो जैसा कि आप अगर उपदेशामृत रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोका देखेंगे तो वाचा बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उदस बेगम, बताते हैं रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो इन 6 चीजों के ऊपर कंट्रोल कर ले वो शिष्य बना सकता है, यानी कि वो भक्त बना सकता है। और ये श्लोका अनादि जगन्नाथ प्रभु के एकदम फिट बैठता है। और इस 6 जो बेग हैं उसमें से मैं एक बेग के ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे 3 मिनट का समय मिला है। तो जो सोचता है जो उनका जो फर्स्ट जो उनका बेग है वाचा बेगा, तो जो बोलने का जो उनका शैली है, जो बोलने में जो सरलता है, इतना अच्छा और मिठास के साथ वो बोलते हैं कि जो उनसे एक बार बात कर ले वो अपना उनका हो जाता है। और आज जितने भी ग्लोरिफिकेशन वहां पर हुए हैं उसमें जो नए भक्त बने हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताया है कि उनके बोलने के तरीके से मैं उनके ऊपर अट्रैक्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर मैं आई थिंक लास्ट एक्सपीरियंस अगर परमिट हो तो लास्ट एक्सपीरियंस बताऊं। एक मिनट प्लीज। ओके, तो मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि वो उनके इंसिडेंट से पहले 1 घंटा पहले मैं उनके साथ था। एक छोटी सी है हिस्ट्री मैं बताता हूँ। 7 o'clock शनिवार को 30 तारीख को 7 o'clock को उन्होंने मुझे फोन किया कि सुभाऊ प्रभु आप कहाँ पर आए। मैं बोला घर पर हूँ। उन्होंने बोला कि एक डिवोटी के फादर इन लॉ का ब्रेन हेमरेज हो गया है, आप आ जाओ मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड में आ जाओ। मैं बोला ठीक है जी मैं पहुंच रहा हूँ। हम दोनों ने वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने डॉक्टर से बात किया है। डॉक्टर से बात करने के बाद में आधा घंटा करीब मेरे साथ डिस्कस किया कि व्हाइटफील्ड में कैसे प्रचार को बढ़ाया जाए। उसके बाद में वहां से वो हम दोनों निकले हैं और वो अपने घर गए हैं। तकरीबन 9:30 बजे मैं अपने घर आया हूँ। 10:30 बजे करीब मैंने उनको दोबारा फोन किया तो उनका स्विच ऑफ आ गया। तो जनरली मैं सोचा कि उनका मोबाइल में पावर ना हो और ऐसा हुआ हो। तो मॉर्निंग में जब भी मैं कॉल करता था दोबारा उनका कॉल बैक आता था। तो मॉर्निंग में देखा कॉल बैक नहीं आया तो फिर दोबारा मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। फिर जब आप फोन करते करते मिसेस ने फोन किया तो मिसेस का फोन लग गया। तो मिसेस को उधर से रिप्लाई आया कि आप इंग्लिश या कन्नड़ में बात करो। तो मैं बात किया कि ये तो जगन्नाथ अनादि जगन्नाथ का फोन नंबर है, आप कौन बोल रहे हैं। वो बोलता नहीं ये अमरनाथ का फोन है। और अमरनाथ का फोन बोले यस जगन्नाथ सेम आदमी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जो अमरनाथ का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहे, वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो तो बहुत साथ लगा, बहुत दुख हुआ। फिर मैं तुरंत बड़ी माता जी को इन्फॉर्म किया और जगन्नाथ मंदिर में सबको इन्फॉर्म किया है। तो उनका कहानी तो बहुत है बट मैं टाइम दिए है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु। मैं रक्षक की तरफ प्लीज 3 मिनट के अंदर प्लीज। थैंक यू। अच्छा कर्म किया उन्हें तो इतने अच्छे पुत्र को, इतने अच्छे भक्त को इन्होंने जन्म दिया। वो आए थे मेरे हिसाब से तो वो पृथ्वी पे एक लीला करने आए। वो लीला कर करके हम लोगों को बाई बाई करके चल दिए। वो इतने समय के लिए आए थे कि अपना जो कर्म थोड़ा सा बचा हुआ था वो कर्म पूरा करके वो चल दिए यहाँ पे। हम लोगों को दिल में थोड़ा सा दुखी हुआ लेकिन वो अच्छे जगह में गए हैं, वो अमर होके गए हैं, वो बहुत लोग गए हैं। उनकी तो गुणगान कितना भी किया जाए वो कम नहीं पड़ेगा। एक समय की बात है कि मेरे बच्चे प्रभु रमैया हॉस्पिटल में एडमिट थे और कंप्लीटनेस बहुत कम हो गया था, डाउन हो गया। डॉक्टर बोला कि ठीक है आपको ब्लड टाइप खिला। मैंने अपना आश्रम में भी फोन किया, सभी को बोले कोई जैसे होगा। और जगन्नाथ प्रभु बोले मैं अभी
और कुछ भी नहीं, जो भी है अभी थैंक यू वेरी मच। वैसे तो बहुत से वक्त हैं, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम यहीं पे रोक रहे हैं। अभी मैं जानसी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन बात, माता जी बात करेंगे। हरे कृष्ण। तेरा चरण निवास Hare Krishna. So this is Jagannath Prabhu's middle sister, Jagannath Prabhu. आप सब जगन्नाथ प्रभु और ये जगन्नाथ प्रभु का सब एक से एक स्पेशल अटैचमेंट था और स्पेशल रिलेशनशिप था। मेरे को जितना जानता है, जो जानसी माता जी का वो स्पेशल जगह था उसके हृदय पे जगन्नाथ प्रभु का। कभी भी उसका तबीयत में थोड़ा कुछ चुनौती आया, तुरंत जो करता था छोड़ के वो जाता था। इतना अच्छा उसको ख्याल करता था। तो वो मेरे लिए बहुत उत्साह की चीज है, क्योंकि बोलता है तो वॉट एवर यू डू इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। ऐसा परिस्थिति जगन्नाथ प्रभु नेचुरली सबको ऐसा वो अच्छा उत्तम बहन था जानसी। कब मिलने के लिए जाए, तो प्रभु जी से माता जी से कैसे पारिवारिक संपर्क हो गया। माता जी प्रभु से बार बार मैंने बोल रहा था कि घर में मेरे को बहुत डांट पड़ता है, एक बेटी शादी नहीं करके रह गया, एक ही बेटा है। और प्रभु वो आप ही शादी का बारे में सोचिए। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, यहाँ मेरे को सबको ऐसे बहुरानी मिले जैसे हमको मिला है वृंदा महारानी। इतना अच्छा बहू, इतना अच्छी बहू वो सबको मिले, इसे इतना अच्छा कृष्ण भक्त रस को पान करने वाली बेटी उड़ीसा की उत्कल के जगन्नाथ धाम की बहुरानी बनी। मलेशिया से आके अपना जो कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण लीला जगन्नाथ अनादि जगन्नाथ प्रभु का घर में भी वो प्रेम होगी। मैंने आपको एक दो बार अनादि का बारे में बोलूंगी। और चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से गए थे और उड़िया में मैं चार धाड़ी मेरा भाई के लिए लिखी हूँ, वो मैं आप लोग को सुनाऊंगी और उसका हिंदी में भी बता दूं। मेरी जो भाई है वो रविवार का दिन जन्म हुआ था, इसीलिए हम सब अनादि जगन्नाथ को घर में रवि बोल के बुलाते थे। तो उसका निक नेम था रवि, और प्यार से उसको मेरा भाई, मेरी बड़ी दीदी ये बापू करके बुलाते थे। आप जानते हैं हम लोग का हिंदू परंपरा में आज भी है, बेटा को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। परिवार में सब चाहते हैं एक बेटा हो जाए, बेटी हो या ना हो, एक बेटा हो जाए। तो मेरी जो माँ है यहाँ बैठी है, आप देख रहे हैं, वो भी एक ही बेटी बची। अपना माँ का जो 6-7 बच्चे थे सब मर गए। मेरी मम्मी अपना माँ को देखे थे, अपना माँ को भी पास में रखे 25 साल से ऊपर, क्योंकि अपना बाप को नहीं देखे थे। मेरा जो माँ यहाँ बैठे हैं, ऐसे माँ सबको मिले।
देवकी का जंत्रणा किसको समझने आता है? देवकी का जो जंत्रणा, वो जंत्र है तो कृष्ण का पावन, कृष्ण का कृपा और कृष्ण को सेवन करने से मिलता है, उसको प्यार करने से मिलता है और वो वात्सल्य रस से मिलता है। वही कृष्ण का संभावना में, जैसे देवकी जो कारागार में थे, ऐसे मेरी माँ एक बेटा के लिए और मेरी जो नानी माँ थी वो उसके बेटा के लिए इंतजार करके थे। तो मेरी माँ कृष्ण का पूजा करती थी और मेरी जो दीदी पीछे बैठी है उसकी नाम क्रांति है, वो 12 साल सोमवार करती थी, शिव जी को पूजा करती थी, हमारे घर में एक बेटा आ जाए, एक भाई आ जाए। मेरा भाई आ गया, भाई आ गया। आप जो मेरे बाप को देखते हैं वो सर्वोदयी है, वो जेपी जयप्रकाश नारायण विनोबा जी के साथ, विनोबा भावे विनोबाचार्य जी के साथ भूदान सर्वोदय मोमेंट में काम किए हैं। मैं बताती हूँ, वो ऐसे जैसे पारंपरिक हम लोग भगवान को मानते हैं, वो ऐसे भगवान को मानने वाले नहीं है। वो हमारे भाई बहन को हिस्ट्री का जो हिस्टोरिकल बेस में नाम दिए हैं। मेरे बड़ी दीदी का नाम क्रांति है, मेरी नाम झांसी है, छोटी बहन मेरी पीछे बैठी है उसकी नाम लोपामुद्रा है। मेरे पापा ऐसे ही कुछ नाम देते मेरा भाई को, मगर जिस दिन नामकरण का उत्सव हुआ, 21 दिन में उड़ीसा में होता है, बच्चा पैदा होने का 21 दिन में नामकरण उत्सव होता है। वही नामकरण का पूजा चल रहा था। तो नामकरण का पूजा में क्या होता है, कोई एक शब्द आता है, कोई एक अक्षर आता है, शब्द अक्षर आता है, वही अक्षर में पंडित बोलते हैं नाम देने के लिए। मगर वही समय एक बाबा आके पहुंच गए और वो बाबा आके पहुंच गए कि मैं अमरनाथ से आए हूं और उनका नाम रहेगा अमरनाथ। तो आपको इसीलिए बताया, हम लोग यहाँ है, आप लोग का प्यार हम लोग को मिला है, मेरे परिवार को मिला है। मैं वृंदा के परिवार के बारे में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो सब वैष्णव परिवार है। मेरे जो पापा माँ है और जो मैं हूँ, हम तो वैष्णव नहीं है, मगर आपसे क्यों हमको प्यार मिला, आपसे क्यों हमको कृपा मिला, आपसे क्यों हमको इतना जो लगाव अभी हुआ, वो तो अनादि जगन्नाथ के लिए हुआ। ये अनादि जगन्नाथ का नाम पहले से भी था अमरनाथ। तो अमरनाथ से एक बाबा के पहले नामकरण उत्सव में ही उनका नाम दिए थे अमरनाथ। तो देखिए उनका जन्म भी ऐसे हुआ है पूजा पाठ में। और ये एक स्पिरिचुअल ग्रेस है, ये एक डिवाइन ग्रेस है मेरे परिवार के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जो नानी थी, वो नानी एक बात बोल के गई थी, मैं जानती नहीं, मैं हिंदी में आपको बता सकती हूँ नहीं। मेरे माँ को बार बार बोलती थी, ये पुओ तोर गोटे बड़ गछ होगा। ये जो पेड़ है ना, ये जो बर का पेड़ को क्या कहा जाता है हिंदी में? अच्छा, वही पेड़ बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बड़ा पेड़ बनेगा कि ये पेड़ में बहुत पक्षियों बैठेंगे, सांप भी रहेंगे और बहुत इंसान, बहुत ये भी जो पशुओं भी है वो भी आके उसका जो छाया वो भी लेंगे। वो तो ऐसे ही हुआ। आज आप लोग को सबको हमारे साथ जोड़ दिया, हमारे साथ मिला दिया। हमको आपके साथ जोड़ने वाले, हमको आपके साथ मिलाने वाले, हमको कृष्ण कृपा को लाने वाले, हम कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं। और उड़ीसा के ऐसे एक इंसान नहीं है, एक इंसान नहीं है जो जगन्नाथ को नहीं मानते हैं। हम लोग उत्कल को जगन्नाथ की धाम बोलते हैं। हम सब जगन्नाथ प्रेमी हैं और जितने जगन्नाथ प्रेमी है वही सब कृष्ण प्रेमी है। ऐसे है जो गुरु सेवा, नित्य गुरु सेवा आप करते हैं, जो नित्य गुरु कृपा आप लाभ करते हैं, वो जो गुरु कृपा का जो शैली है, जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा, वो हमारे जो पारंपरिक परंपरा से भिन्न है, वही है। नहीं तो हम आपसे कभी भी अलग नहीं है। दो धाड़ी मेरा भाई का नाम। और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कल मेरी छोटी वाली बहन बोल रही थी, उसका पढ़ाई का ढांचा भी अलग था, दूसरा था। तो वेरी इंटेलिजेंट, सुबह उठेगा, वो सुबह उठेगा। हमारे घर में सुबह उठना मेरा माँ बाप का कल्चर है क्योंकि वो गार्जियंस है। बाबा तो 4 बजे उठ जाएंगे। और मेरी भाई भी माँ के साथ पूजा में साथ देना बचपन से ही था।
हमेशा सुबह उठेगा और उठ के नहाएगा, फिर पूजा घर में जाएगा, माँ के साथ बैठ के पूजा करेगा। और ये था, और सबसे अच्छा बात था उसका, जो बचपन से अभी तक हमने देखा है। एक बात कैसे मैंने किया, मेरे को कैसे किया, 2 मिनट में प्रभु से बोलूंगी 2 मिनट लेने के लिए, क्योंकि वो आप लोग को जानना चाहिए। वो इतना डिसिसिव था, वो खुद डिसीजन जो लेता था ना वही करता था। वो किसी का बात नहीं सुनेगा, जो अपना दिल में आ गया, जो मन में आ गया, बस वो हो ही गया। वो उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये 10th में टॉपर हुआ, प्लस जो स्कूलिंग तो एक छोटा सा जगह पर एक इंग्लिश मीडियम ICSE बोर्ड का जीवन ज्योति कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई शुरू की। पहले वो पढ़ाई गिरजा में होता था, चर्च को लेकर छोड़ना पड़ता था, लाना पड़ता था। उसके बाद बड़ा स्कूल बन गया, वो कन्वेंट स्कूल, वहां पढ़ता था। फिर हायर क्लास के लिए जैसे 6th का बाद टीचर वहां अच्छा मिल गए, तो पास में HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो बैंगलोर में आपका उसका हेड ऑफिस है, उसका सबसे बड़ा ब्रांच सुनाबड़ा में है, उड़ीसा में। तो वहां एक बहुत अच्छा कन्वेंट स्कूल था, उसको VSP कहा जाता था। वो VSP स्कूल में मैंने मेरी छोटी वाली बहन को, लोपामुद्रा को तब ले चुकी थी, उसको भी लेके मैंने एडमिशन किया। वो भी बहुत कष्ट था, वो भी एंट्रेंस दे के मिलने से ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलिए, वो एंट्रेंस पे भी टॉप किया और गया। इतना टाइम नहीं है, मगर मैं ये सब लिख के तो आप लोग को जरूर दूंगी, क्योंकि उसका जीवन जो शैशव कैसे था, इसका एडल्टसन एज कैसे था, चाइल्डहुड कैसे था, वो भी थोड़ा आप लोग को जानना चाहिए। फिर वो क्या किया, जब वो स्कूल में लेकर डाल दिया और वो स्कूल का वो टॉपर हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग था, जब वो पढ़ रहा था तब साइंस में 100 से 100 और मैथ में 100 से 100। मैथ्स में तो 100 से 100 आता था, पर साइंस में 100 से 100 आता थोड़ा रेयर था। इसीलिए उसको, उसके लिए GM जो जनरल मैनेजर है सुनाबड़ा HL का, वो स्पेशल गिफ्ट दिए थे, पापा को बुलाए थे, फेलिसिटेट किए थे, उसको किए थे, बहुत अच्छा किए थे। वो कल मेरी छोटी वाली बहन भी अपना प्रेजेंटेशन में बोल रही थी, वो क्रिकेट खेल रहा था। कितना छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा है, उसको जाके कोई बोलता है तुम स्कूल का टॉपर बन गया और तुम्हारा इतना अच्छा मार्क आया है और तुम आओ, तब भी वो बताता है वो तो मेरा खेल का टाइम है, मेरा खेल का टाइम खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम फिर जाएंगे ना, रिजल्ट पता, रिजल्ट आया है। मैंने एक ये किया, मेरा पापा उसको 11th में स्कूल में ही ज्वाइन कर दिए, पास में स्कूल है, तो वो घर में खा के पी के जाके पढ़ेगा। मैं बोली आके नहीं, उसको स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको कॉलेज ले जाएंगे। तो 200 किलोमीटर मैंने उसका वो चेंज कर दिया। कुछ फ्रेंड उसका आए थे, आज भी 2 फ्रेंड आए थे, तो एक ऑटोनॉमस कॉलेज था, वहां लेके मैंने गई। और उसका जो सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ मैंने बायोलॉजी रख दिया। मैंने बोला तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का पढ़ाई करना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना है। और 1 महीने के बाद जब मैं देखने के लिए आई तो चेंज कर दिया है। तो मैंने तुमको मना किया था, तुम मेरे को बायोलॉजी दे दिया, तो चेंज करके अपना सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स रख दिया है। ये है मेरा भाई, जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो उसका जो भावना हृदय से ना आए, जो अपना अंतर से ना आए, जो भाव अंतर से नहीं आया, और जो काम करने के लिए उसको अंतर से वो भावना नहीं आया, उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब से गुरु महाराज के संस्पर्श में आया और चैतन्य अवतारी प्रभु मेरे पास में बैठे हैं, जो शुरू में हमेशा जब घर में जाता था वही दोनों बारे में, माता जी के बारे में, प्रभु के बारे में और अपना गुरु महाराज के बारे में बार बार बोलता था। और एक बात मैं आपको बोलूं, ये किसी का घर में होगा नहीं, बहुत कम घर में होगा। ये पहले तो नौकरी शुरू किया इंफोसिस में, और इंफोसिस के बाद एक अमेरिका बेस्ड कंपनी टारगेट में वो किया, वो अमेरिका में था। फिर वहां से आया, प्रभुपाद के साथ वो लॉस एंजल्स में कुछ दिन रहा था। उसके बाद मेरे को ये याद नहीं आता है कि प्रभुपाद का तब तबीयत खराब हुआ था कि नहीं, मगर आके मेरे पापा को एक दिन रात में बताया कि मैंने नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। आप बोलिए, आप लोग का घर में कोई बेटा आके पापा को बोलेगा कि हम नौकरी छोड़ेंगे, कोई भी पापा माँ पहले पूछेंगे क्यों छोड़ोगे, नौकरी छोड़ने के लिए तुम पढ़ाई किया था क्या? मगर एक धारी में मेरे पापा बोले तुमको नौकरी करने के लिए मैं नहीं बोला था, तुमको पढ़ाया था, वो मेरा कर्म था, मैं तुमको पढ़ाया था, मगर तुम नौकरी करो बोल के मैं तुमको कभी नहीं बोला था। नौकरी तुम छोड़ोगे वो तुम्हारा इच्छा है। ये है मेरा बाप। और मेरा माँ एक दिन भी उसको जोर से बात नहीं किया,
और वो ऐसे भाई था, पिता माता का बात तो छोड़ो, अपना 3 बहन, हम 3 बहन बड़े हैं, और अपना जो दोस्त है, अड़ोस पड़ोस है, जो रिलेटिव है, वो किसी को भी कभी जोर से नहीं बोला है, किसी का मन में कभी दुख नहीं दिया है। आप सोचिए, जब ये दुख वैष्णव के लिए एक वैष्णव को होता है, एक कृष्ण प्रेमी के लिए एक कृष्ण प्रेमी को होता है, आप सोचिए जो घर में उसका लीला खेला हुआ था, जिस घर में उसका चाइल्डहुड एडोलेसेंट एज था, कटा था, पढ़ाई हुआ था, सब हुआ था, कितना याददाश्त जोड़ा है हम लोग के साथ, ये तो टूटा दिया है मेरा माँ और पिताजी को, मगर ये तो हमारे मर्जी नहीं है, दैट इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम लॉ। सो उनका डिसीजन को कौन चेंज कर पाएगा। और उनके लिए 2 शब्द में लिखी हूँ, वो थोड़ा आपको सुना दूंगी, वो मेरा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, उसके बारे में जो 2 धाड़ी में लिखी हूँ, वो 2 धाड़ी आप लोग को सुनाने का जो सौभाग्य मिला है, ये तो मेरे को और नहीं मिलेगा, तो वो सुनाने जाती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हिंदी भाषी हैं। देखिए, उसका नाम रवि था, उसका नाम अमरनाथ था, और फिर वैष्णव में उसका नाम प्रभुपाद ने अनादि जगन्नाथ दे दिए। उसको लेके मैं लिखी हूँ, तू अनादि, हम तो तू करके बोलते थे, 10 साल छोटा था मेरा भाई, तू अनादि तू अमर, तू अनादि तू अमर, तू रवि तू चिरभास्कर। मेरे को लगता है वो समझ में आ गया सबको, तू भी अनादि तू अमर, तू रवि तू चिरभास्कर, तो मृत्यु मोह पई नूतन सकाल नूतन सिद्धांत करो। तो तुम अनादि हो, तुम ही अमर हो, और तुम ही रवि हो, और ऐसे भास्कर, ऐसे तेज तुम्हारे पास है, तुम्हारा जो जाना मेरे लिए एक नया सकाल, एक नया शुरुआत, एक नया शुरुआत होता है मेरे जिंदगी का, एक नया सिद्धांत भी मेरे को लेना पड़ेगा कि फिर मेरे को ये जिंदगी को आगे कैसे लेना है, तुम्हारे बिना मेरे को आगे कैसे जाना है। जीवन चक्र सब संभावना, जीवन चक्र सब संभावना को इच्छा मते जी बाहुड़ीवा, ये भी एकदम सही बात है। वो 42 साल जिया, 42 इयर्स का जिंदगी, जैसे 39 इयर्स का जिंदगी था विवेकानंद जी का, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का, ऐसे 42 इयर्स का जर्नी मेरे भाई का अपना इच्छा का हिसाब से किया है। जो करना चाहा है वो किया है, जो करना चाहिए, जो चैलेंज को फेस करना है वो चैलेंज को देखा है, वो चैलेंज को लिया है, वो अपना जिंदगी में जीवन चक्र समान हम लोग का सब लाइफ साइकिल, जो एक लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल का जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था अपना जिंदगी में, जितना वो कर सकता था, वो अपना 24 घंटा को और 40 घंटा भी बना सकता था, वो था उसका हाथ में। मेरे को करना है तो मेरे को करना है, तो वो क्यों हुआ, यह बोधे कृष्ण चेतना रहे हुए, इतना काम वो क्यों कर पाया, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए कर पाया, नहीं तो कभी वो इतना काम, इतना एक दिन में इतना काम कभी भी नहीं कर सकता था। घर को पूछना, बाहर को पूछना, अपना डिवोटी के साथ रहना, डिवोटी के पास अपना हृदय को देना, ये नहीं होता। पार्थिव बंधनों को छिन्न करी शांति रे परिपूर्ण जीवन भी बंची जाइए, वो हमको सिखा दिया कि ये जो है, ये जो वर्ल्ड में, ये जो पार्थिव वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम लोग जीते नहीं हमेशा, ये पार्थिव वर्ल्ड को भी एक पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। चेंज हो सकता है, लेकिन चाहेगा तो अपना फुल बॉडी को स्पिरिचुअल कर सकता है। तो दुर्घटना है, तो दुर्घटना मीन्स एक्सीडेंट, तो दुर्घटना है मो पाई घटना बहुल। सो जो एक्सीडेंट उसके लिए हुआ ना, जो एक्सीडेंट में वो चला गया, हम अभी देख नहीं पाते। We cannot see, but we can feel. We cannot see, but we can smell. We can realize what is Anadi Jagannath, what is his attitude, sacrifice, dedication, everything. तो उनके जो एक्सीडेंट, उनका जो जिंदगी ले लिया, वो मेरे लिए तो इतना घटना हो गया, मैंने इतना इवेंट्स मेरे जिंदगी में, और उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, हो गया। ISKCON कृष्ण प्रेम वैष्णव सेवा
आचरण उच्चारण गुरुनिष्ठा प्रचार प्रसार श्रेष्ठ बना धन्य है गुरु कृपा। बस हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि तुमको ये जो जिंदगी मिला वो जिंदगी कृष्ण कॉन्शियस में तुम दिए और तुमको गुरु कृपा मिला, ये सबका भाग्य में नहीं। सॉरी, हम आप लोग का थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। फिर सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण, अनादि जगन्नाथ प्रभु की जय। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, थैंक यू। Yeah, I would like to request in this case सर्वव्यापी प्रभु अनादि जगन्नाथ की जय। हरे कृष्णा। First of all, I should thank Anadi Jagannath Prabhu for inspiring me in all the ways. Once I came for Mangalarti, I reluctant to sing Guru Astakam. He only inspired me first time in so many I'm in ISKCON, but he is the only person to me to inspire me to sing Guru Astakam Mangalarti. I should thank him, and even now I remember him whenever I sing Samsaradava in the temple. Only by his inspiration, even today I am singing Guru Astakam in the temple. Thank you, Jagannath Prabhu. The last speaker from here will be Shri Mataji from the United States. She would like to share glorification. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. For the last 1 week, I've been hearing so much about Anadi Jagannath Prabhu. I am not at all qualified to speak about such a pure devotee, but I'm hoping that I can purify myself by trying to say a few words about him. I got to know Prabhu 8 years ago through my very dear friend, Vrinda Maharani, and her family. They are very dear to me. And at their wedding, I realized that Vrinda Maharani is being joined in matrimony with someone who is perfect for her. We always knew Vrinda Maharani to be a very equipoised and qualified person. But at the wedding, everyone from Bangalore, all the devotees from Bangalore, they came to us, my friend and I, and they were telling us wonderful qualities about Anadi Jagannath Prabhu. And that's when we realized that, okay, Brinda is getting married to someone just like her, and they will be perfect for each other. And for the last 8 years, we have seen that they were indeed perfect for each other, serving Guru Maharaj and serving the Lord so beautifully. And a lot of devotees and his family have said about how he is so respectful to his elders. And I saw this during their engagement in Mayapur, where he was served drinks by a devotee, and he very humbly said that, you know, his parents should be served first. And he made sure that his parents were served first before he took any service from anyone. And through association with Vrinda Maharani, I got to know about Prabhu more. And I could see that even in her life, you know, how instrumental Prabhu was. You know, he was a great spiritual guide, like any husband should be. And I also realized, and I saw that later, he brought a lot of innovative preaching ideas to Malaysia. And through the Gita Gyan program, he really truly created a revolutionary preaching program in Malaysia. And, you know, Prabhupada has said that purity is the force, and we could see that this is what really worked. This is what really worked through Prabhu, his purity, his dedication to our Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami, his motivation to spread the holy names of the Lord is extremely inspiring. And I think even in his passing, he is inspiring thousands of people.
My prayers to Guru and Gauranga to give everyone who has had close association with Prabhu the strength to move on, especially to his wife, Vrinda Maharani, his parents, his sisters, and his in-laws. I just pray, and I'm so inspired to hear about his glories. And if I can be like my God brother, even a little bit, I consider myself fortunate. Thank you very much. Hare Krishna. We will be concluding with the last two speakers. I would now request Her Grace Rasmi Mataji to please come and share her thoughts. Kindly bear with us for another 5 to 10 minutes maximum. Please be patient. Thank you very much. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे श्री गुरुदेव की जय। अनंत जगन्नाथ प्रभु की जय। Shall I speak in Hindi? तो अनादि जगन्नाथ प्रभु जैसे ही उनको बैंगलोर में इन्फोसिस में उनको काम मिला था, तब परम निताय प्रभु उनको हमारे संग लेके आए। परम निताय प्रभु इधर बैंगलोर से जाते थे, कोचिन जाते थे अनादि जगन्नाथ प्रभु और उनके ग्रुप को क्लासेस लेने के लिए। अनादि जगन्नाथ प्रभु, सुहृदा प्रभु और कुछ लोग थे, मैं उनको याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो अनादि जगन्नाथ प्रभु जब इधर आए तो पहला उस संडे था, संडे परम निताय प्रभु हमारे घर लेके आए। उस टाइम भक्ति वृक्षा चल रहा था और उनका इंट्रोडक्शन किया कि ये अमरनाथ सिंह है, ओडिशा से है, ये NIT में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है और बहुत अच्छा भक्त है, उनको इन्फोसिस में जॉब मिला है, अभी वो रहने के लिए स्थल ढूंढ रहा है। तो प्रभु बोले आप उनको आश्रम में लेके जाना, आपके साथ रख लेना। तो जब वो आश्रम में थे तब एक हफ्ता के बाद वो वापस गांव जाने था, ओडिशा जाने था। तब मैं वृंदावन शाम को बोला अभी अमरनाथ सिंह गांव जा रहे हैं, उनको हाथ में थोड़ा प्रसाद लेके देना, क्योंकि उनको वो नहीं लेगा। एक हफ्ते में हमको पता चल गया था कि वो किसी से सेवा नहीं लेता है, तो हम बोला वो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आप उनको इंसिस्ट करके उसको प्रसाद देना है। तो अमरनाथ प्रभु का जैसे ही वो गाड़ी छूट रहा था, ट्रेन छूट रहा था, वृंदावन श्याम प्रभु ट्रेन के पीछे पीछे भाग के उसको प्रसाद दे दिया। तो अमरनाथ मतलब जगन्नाथ प्रभु बोलते हैं मैं एक्चुअली इस वापस नहीं आने का सोच रहा था, मतलब आश्रम में नहीं आने का सोच रहा था, लेकिन वो खिचड़ी जो उन्होंने दिया मुझे बांध दिया, तो मैं वापस आना पड़ा। तो उस दिन से वो हमारे संग में रहना शुरू कर दिया। तो जैसे मेरा बेटा बोल रहा था कि अनादि जगन्नाथ प्रभु उनका बड़ा भाई है, वो मेरे लिए मतलब बहुत सारे लड़के थे उनके साथ, वो सभी मेरे बेटे जैसे ही थे, और जगन्नाथ जो थे वो बड़े बेटे जैसे था। और जैसे उनका व्यवहार चिदानंदा के साथ, चतुर के साथ बहुत मतलब बड़ा भाई का तरह ही था। लेकिन जब चतुर कुछ करता था, अगर मैं उसको डांटती थी तो जगन्नाथ को अच्छा नहीं लगता था। तो चतुर उसका मुंह बहुत छोटा कर देता था कि मैंने उसको डांटा।
तो जगन्नाथ को वो भी पता था कि अगर वो उसको जाके कुछ बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मैं पीछे जाती थी तो वो जाके चतुर को सांत्वना देता था। तो मैं बोलती थी, जगन्नाथ तुम इसको बिगाड़ते हैं, तुम उसको नहीं माता जी, वो अच्छा भक्त बन जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं बोला ठीक है, आपको तो उनको आशीर्वाद देना है, लेकिन जब वो कुछ गलत करता है तुम उसको डांटना है। तो बोलते हाँ हाँ मैं डांटता हूँ, लेकिन वो कभी उसको डांटता नहीं था, बहुत प्यार देता था। तो मतलब बच्चों को भी बड़ों को भी वो बहुत अच्छी तरह से वो देखभाल करता था। और उनका ये बहुत मतलब he was very anxious that everybody has to be कृष्णा कॉन्शियस, मतलब सब लोग कृष्ण भक्ति में रहना है, वो व्याकुल था। और वो ये सोचता था कि किसी का भगवान के प्रति जो श्रद्धा था वो कभी नहीं खोना। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। Nobody should lose their faith on the Lord. He always wanted everybody to have faith in the Lord. So I'll give an example. In 2013 में हम वृंदावन यात्रा गए थे। उधर राधा कुंड में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कीर्तन किया, सभी किया। सतकीर्ति अभी जो मायापुर में है, तो उसका शादी के लिए बहुत ढूंढ रहे थे, उनके माँ बाप बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी सेट नहीं हो रहा था। तो उनके माँ बाप ने आके मुझे बोला, माता जी अभी सभी भक्त लोग इधर हैं, वृंदावन धाम भी है, राधा कुंड भी है, तो हम सतकीर्ति के अच्छा वर मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सब लोग मिलके प्रार्थना किया, तो मतलब सतकीर्ति को अच्छा वर मिले। तो बाद में जगन्नाथ प्रभु आके बोलते हैं, माता जी ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हम ऐसा हो गया, लेकिन अगर भगवान सतकीर्ति को टेस्ट करने के लिए जाएंगे और सतकीर्ति को अगर वर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सतकीर्ति का श्रद्धा तो नहीं चले जाएगा ना। ये बोला आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान राधा रानी ठीक कर देगी। अगला साल हम देखते हैं कि अनादि जगन्नाथ प्रभु का शादी के एक दिन बाद सतकीर्ति का शादी भी हो गया। मतलब उनका मतलब जब सतकीर्ति का भी शादी तय हो गया, वो बहुत खुश हो गया। मतलब अभी राधा रानी ने उसका मान रख लिया और सतकीर्ति का भी शादी हो रहा है, और हमको बहुत खुश हो गया कि मतलब दोनों का एक साथ, मतलब पिछले दिन अनादि जगन्नाथ प्रभु का हुआ और अगला दिन सतकीर्ति का हुआ, और वो बहुत खुश था। मतलब अभी उनका राधा रानी का मान रख लिया और राधा रानी का के ऊपर जो श्रद्धा है वो बढ़ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक कदम में वो सोचते थे कि कैसा क्या असर पड़ेगा भक्तों के ऊपर, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा वो बहुत सोचते थे। तो अभी विश्वेश्वर प्रभु मुझे देख रहे हैं कि क्या मैं मतलब बहुत सारे चीज है उनके बारे में बोलने के लिए। जैसे हमारा जो रिश्ता था प्रभु और मेरा और अनादि जगन्नाथ प्रभु का रिश्ता था, एक बेटा और माँ बाप का रिश्ता ही बराबर था। और प्रभु बोले कि कैसे अनादि जगन्नाथ प्रभु, और झांसी माता जी भी बोली कैसे अनादि जगन्नाथ प्रभु अपना जॉब छोड़ के यूएसए गए गुरु महाराज का सेवा करने के लिए। लेकिन मैं एक बात इधर बोलना चाहती हूँ कि जब अनादि जगन्नाथ प्रभु आए, प्रभु से उनका ये इच्छा प्रकट किया कि मैं गुरु महाराज का सेवा करना चाहता हूँ, तब प्रभु ने पहला एक बात बोला, पहला आप अपने माँ बाप का परमिशन लेके आना, अगर वो बोलेंगे तो मैं जाके गुरु महाराज से बात करूंगा। और जब अनादि जगन्नाथ प्रभु उनके माँ बाप के इधर गए तो झांसी माता जी भी बोला कि टीटी से उन्होंने बोला कि उनको परमिशन दे दिए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो कैसे परिवार में आ रहे हैं, उनके माँ बाप भी कितना उनका सेवा का भाव है। तो वही भाव, सेवा का भाव हम जगन्नाथ प्रभु में देख सकते हैं। मतलब
वो गुरु महाराज का सेवा करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पूरा आशीर्वाद से, माँ बाप और पूरा परिवार उनको पूरा आशीर्वाद से उनको उधर भेजे। मतलब परिवार में सब लोग खुश थे कि वो गुरु महाराज का सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे हमको समझ सकते हैं कि ऐसा कि वो सेवा भाव अनादि जगन्नाथ प्रभु को किधर से आ रहा है। मतलब पूरा परिवार में ये सेवा भाव है तो ऑटोमेटिकली बच्चा को भी वो सेवा भाव आ जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम घर कैसा, मतलब हमारा परिवार का कैसा माहौल है, वो माहौल डिपेंड करता है कि कैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है। तो हम अनादि जगन्नाथ प्रभु को सदैव बोलते थे कि तुम इतना सभी का सेवा करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि तुमको ऐसा पत्नी मिले जो तुमको उस सेवा में आपको हेल्प करे, मतलब साथ दे। और जब वृंदा महारानी उनका पत्नी बनी तो हम बहुत खुश हो गए कि उनका जो सोच विचार है उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए वृंदा महारानी भी आ गई। जैसे एक माताजी, देवकी माताजी, जो उनको कैंसर था, मे बी 3 months शी स्टेड विथ यू। तो 2 महीना माताजी इनके घर में रही और दोनों पति पत्नी उनको इतना अच्छा सेवा किया। तो अगर वृंदा महारानी उनको सपोर्ट नहीं करती थी तो जगन्नाथ प्रभु को बहुत दुख होता था। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया कि वृंदा महारानी भी जगन्नाथ प्रभु का ही सोच विचार रखे उनको इतना अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही थी। तो हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ प्रभु और उनके परिवार का अच्छा ही देख के उनको और एक अच्छा परिवार से उनको दोनों को मिला दिया। तो ये जरूर भगवान का ये आशीर्वाद है कि मतलब वृंदा महारानी को ऐसा अच्छा पति मिला और जगन्नाथ प्रभु को इतना अच्छा पत्नी मिला और उनको अच्छा परिवार, दोनों को इतना अच्छा परिवार भी मिला जो जिनका सोच विचार एक ही तरह है, सेवा का भाव है। तो हम इसे सीख सकते हैं कि कैसे हम अच्छा सेवा भाव रखेंगे तो कैसे भगवान हमारा रक्षा करेंगे। मतलब रक्षा अभी हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ प्रभु का भी ऐसा अच्छा रक्षा किया है, उनको अपना पाद धूलि में ले गए हैं। So the Lord has been very merciful that he didn't want him to suffer anymore in this material world। इस भौतिक जगत में और ज्यादा उनको कष्ट भुगतना नहीं चाहते थे भगवान, तो इसीलिए उनको लेके चले गए। तो ये सोच के हमको खुश होता है कि वो भगवत धाम पहुंच गया, लेकिन ये दुख होता है कि हमको उनका संग नहीं मिल रहा है। लेकिन उनका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो उन्होंने पहुंच गया। तो ये बहुत आनंद का आनंद देता है। हरे कृष्णा। अनादि जगन्नाथ प्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला गुरुदेव की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। Thank you very much. मैं आप लोगों के पास 2 मिनट आप लोगों का टाइम ले। अनादि जगन्नाथ प्रभु तीनों व्रत पालन करते थे। एक था अनिंदा व्रत, तो किसकी निंदा करते नहीं थे। दूसरा था निर्भय भावना, किसी से इनका वैर नहीं था, किसी से इनका वैर न, किसी के साथ इनका कभी भी इनका विरुद्ध मत होता नहीं था। वो कोई गलत बोलते हैं तो इनको वो समझाने के लिए इनके घर को भी चल जाता था। वो बचपन का आदत है। और था
समत्व बुद्धि, इनका समत्व बुद्धि तो कभी भी उत्तेजित होता नहीं था और एक को समान दृष्टि से देखता था। अनिंदा व्रत समत्व बुद्धि निर्भय भावना, वो अनादि जगन्नाथ प्रभु का जन्मजात गुण है। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, जब इनके पढ़ाई के समय इनका हॉस्टल को हम जाते थे, जब कुछ मिठाई वगैरह लेते थे, वो मिठाई वो अपने बेड के ऊपर रख देता था, अपने बेड के ऊपर रख देता था, बस बच्चे लोग खा लेते थे। इससे था वो मेरा अभिमान, वो था मेरा अभिमान। वृंदा जैसे बहू तकदीर जिसके अच्छे होते हैं, इनसे इनको प्राप्त होते हैं। मेरे बहू के लिए मेरे अभिमान है। और मेरे बारे में कुछ जानकारी मेरे बेटी ने दिया। मैं बुद्ध तथागत से ज्यादा मानता था, एक तरह की निरीश्वरवादी थे। मेरे को जगन्नाथ प्रभु ने ही बता, मैंने मेरे प्रस्ताव को लाया ये ईश्वरार्पण के बारे में, तो मेरे को भी समझाया। एक बात मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे ये बुढ़िया हर वक्त शाम और सुबह से हमारे मंदिर जैसे घर है, इसमें पूजा करता है। मैं नहा के सुबह जाता था, कभी कभी रणछोड़ जी महाराज को निवेदन करता था, प्रभु तुम अवतरित हो मेरे वधु के घर में, जो मेरी बात वो सुने नहीं। तो आज आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों के स्नेह और बंगालोर के जो प्रीति, जो संप्रीति, ममता, जिसके बाद मेरे लड़की ने इनके कविता में कहा, वो तो उड़िया में था, समझ में आता होगा नहीं। तो आप लोग का संप्रीति, आप लोग का श्रद्धा और स्नेह को हम संभाल करके रखेंगे। वो हमारा पूंजी है, पूंजी, उसको हम रखेंगे। चैतन्य प्रभु इधर है, वो एक महान आत्मा है। इन्होंने मेरे को, मेरे बेटों के बारे में, वो अच्छे रास्ते पर है, आप शांत हो, आप निश्चिंत रहो, वो ठीक रास्ता पर है, वो बोलते थे मेरे को। और आज फिर इसको हराने के बाद आज इनसे मिल रहे हैं। मैं कभी पूछा नहीं मेरे किसी बच्चे को, सब कुछ काम करते, कितने तनख्वाह पाए, क्या खर्च किए। मैं मेरे बेटे पर इतने विश्वासी थे, वो सत पथ में, सत रास्ता पर खर्च करें। इस बारे में मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो ऐसे था ही, और इसी ऐसे रास्ते पर चल के तो हमको छोड़ के चले गया। तो आज मैं आप लोग के सामने क्या कहूँगा। प्रणाम। हरे कृष्णा। अनादि जगन्नाथ प्रभु की जय।
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताक स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पादाय नताय कृपा प्रदायने गौरकदा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So Hare Krishna, dear devotees. At the outset, I would first like to thank His Grace Chaitanya Avatari Prabhu and Her Grace Rasamai Mataji for this very well organized Smriti Sabha in honor of His Grace Anadi Jagannath Prabhu. Actually, this seems to be his birthplace for spiritual life, and we are very indebted to Chaitanya Avatari Prabhu and his good wife for actually educating him in the tenets of Krishna consciousness and training him very nicely. Because every time I notice when he speaks, initially he told me, I'm a product of Chaitanya Avatari Prabhu. Preaching. So that much of respect and gratitude he had for this team here. So we would like to actually place our gratitude for having trained such a nice devotee. So I'd just like to share with you all one thing. Much is said about Anadi Jagannath Prabhu. I also shared this with the devotees in Jagannath Mandir in Seshadripuram, that all of us have been saying how he is so nicely serving and how he's been so active and all that. But you know, and that it's that everyone is aspiring to emulate him, you know, to get the same mode. And actually, one thing which actually was the basis for this mode is, we should understand, was his Guru Nishtha. He always taught in these lines. He always thought, if at all he had any problems, he was at crossroads, he wanted to take decisions, he wanted to advise some people, he always thought, what would my Guru Maharaj have done in this situation? Or how would have he advised me in this situation? So this Guru Nishtha is actually the success of a spiritual life. And I think what we should do now is, if we want to become like Anadi Jagannath Prabhu, we should also develop this Guru Nishtha to our respective gurus. This is extremely important for us to come up in spiritual life and to actually sustain our Bhakti Lata Bija. It's not very easy to remain Krishna conscious all the time, you know. There's always ups and downs, but to be in the same level or in the same mode to carry on this mission, this is very important. And I would also like to share how this whole marriage and how is this, how we got Anadi Jagannath Prabhu. When it shows how, actually I think we registered at the JPS Marriage Bureau, and they have contacted you all. I'm not sure how it worked, but somehow you all were instrumental in recommending this marriage to Guru Maharaj, you know. And when I knew about it, I directly contacted Chaitanya Avatari Prabhu, I think. And I didn't pay, to be very frank, when Guru Maharaj approached us. Actually first Mahavara Prabhu approached us. We didn't pay much attention. And second time, Guru Maharaj himself called us and he spoke to us. Still, we didn't pay much attention. Third, I mean, this is a natural, this thing, you know, of a parent, very apprehensive, different cultural backgrounds. We don't know the person, how to, you know, get this marriage proposal. And once when Guru Maharaj insisted, he called my husband separately and he said, I have already told your wife and she's not doing anything about it. So now you tell her to pursue this matter. So he said, okay, Guru Maharaj. And then my husband was also pushing, and
Then I was thinking and thinking about it. I somehow I was not getting through it at all. Once Guru Maharaj called me up, it was in the airport. He's leaving. He called me separately. There were a host of people there in the airport. He asked me, "What is your problem? Why are you not pursuing this matter?" I said, "Guru Maharaj, please understand. This is my daughter. I know how she was brought up. I'm a little apprehensive whether she can go and stay in India and live in India first and foremost. That's my biggest worry, and I don't know what is the nature of his work, how he is earning, what is his job. I don't know anything. How can I just say yes?" So I told him that Guru Maharaj blasted me out. He said, "You think I don't know your background? You think I don't know about your daughter? You think I will give a match who is not befitting to your daughter to you? Will I ever recommend that? I have known your family for so long." That kind of thinking. That's all silence. After that, we never even inquired anything. We just proceeded with the marriage. And it turned out to be a very successful marriage. We were very happy, and we understood how Guru Maharaj was 100% correct in recommending this person. How such a great personality, such a nice devotee. And we were all very, very happy with this matchmaking. So that was Guru Maharaj's mercy at the time. I just thought I'll share it with you all. Thank you. Hare Krishna. I just want to add a few things since you placed across this topic. Probably by Guru Maharaj's mercy, we kind of facilitated many of the devotees' wedding. This was one of the toughest proposal I had taken up. I also have to receive many things from Guru Maharaj. I said, "Why are you not convincing Shantanu?" I said, I tried my best. I spoke, and subsequently couldn't see it because and many of you don't know, she is one of my inspiration. When I took up the Krishna consciousness, Shantanu Pamati and Tattva with Prabhu, they are serving Guru Maharaj for 40 years in Malaysia. So when I took up the Krishna consciousness, Guru Maharaj used to visit two places prominently in those days. One is Malaysia. Everything, anything, Guru Maharaj is in Malaysia. So that's how he's got a special love for Malaysia devotees. So Mataji, doctor by profession, so Mataji used to take care of all Guru Maharaj's health-related dealings from those days. Now we have a big team of devotees. Those days there are not many doctors. So Shanti Rupa Mataji is the primary physician for Guru Maharaj. Anything, you would immediately consult Shanti Rupa Mataji. So it's such an illustrious family, by the way. So this is a wonderful thing. So I was also thinking that such an illustrious family, Anadi Jagannath Prabhu's mom. So one of the biggest hurdles what I faced, personally we faced, was their whole Krishna conscious faith is going to be shaken up, and he was not willing to marry. Jansi ji used to call and technically harass us. You ought to get Ravi get married because parents are upset that you will not get married, and Lopa will call and say she will have. So I was just kind of bombarded everywhere. So then finally we just somehow it just happened to that we were just kept on seeing he anyway just refused to get married. So in spite of that, we decided that in any way he should get married because the whole family will become against Krishna conscious. Because such a nice family, I had a personal relationship with every one of them for many years, and they were just thinking that you will be a normal person, get married, and so if we just one mistake would cause big problem. So I just took up this matter with Guru Maharaj. I don't know what to do because there's so much pressure. The Guru Maharaj heard and saying that, okay, just see what he can do. This is what he said. Then I just quickly checked back, and
we started just randomly just looking at whatever is just matching. Then we saw that, Vrinda Maharani. Then we started, whose daughter is this? Shant. Actually, when we checked the horoscope of Vrinda Maharani Mataji and Anadi Jagannath Prabhu, it was 85%. I mean, we had never seen a horoscope where 85% match is there. And it was amazing that it was 85%. Maximum we would have seen 75 or 78. But this was 85%. And we were really very happy. So then we proposed this to, is it something like this? And is it something like this that I don't know how do we proceed this? Do you want me to talk to both of them? First of all, convince them. And because again, the same logics, what you said, that different culture, different background. And Anadi Jagannath by default to Tamilian because they always speak Tamil, so he picked up some Tamil, so just many things fell in place. So it's presented to Guru Maharaj. Guru Maharaj initially said, "Do you think that this will go through?" I said, "Guru Maharaj, that was fresh. That Anadi Jagannath served Guru Maharaj. He also remembers him 6 months continuously, so he had an assessment of what is he." So then I proposed, this is what he's doing with me for these many years. I think he's got a lot of leadership qualities and he's a preacher, very enthusiastic. And I want somebody should not kill his spirit. So I'm just looking at somebody. I thought, Shanti Rupa Mataji, that lineage will be the best bet for him. This is what my thought and I leave it to you. That's what my statement, and I gave it, handed over to Guru Maharaj, and he kept on and he just pursued. And she also asked me that what you did some time back also. So. One more thing, so we were talking, actually literally Guru Maharaj was arguing with me for this, And let them know each other, and if they like each other, then let the marriage go on. If they don't like, we won't get. So Guru Maharaj, that is a deal. He said, okay, that's a deal. I like that. So Guru Maharaj is so compassionate, and he doesn't force things on you, and he dealt it in a very nice manner, I should say, very, very diplomatically. Hare Krishna. And I think the first meeting was in Jagannath Mandir. Yes. Ajapur Jagannath Mandir. That's where we met. Then somebody had given a feast and we all had the feast. It was a wedding, right? Yeah. So that's such a illustrious, there are many devotees as Grahasthas live their life for many decades, in my opinion, without achieving a Krishna conscious purpose. But here is a wonderful Grahastha, young Grahastha couple who actually set us a very tall target to achieve, even though it was 8 years of marriage. But the whole world speak about this wonderful devotee couple. So this is kind of a life as Vaishnavas one should lead. This is a lesson what I learned from the life of Anadi Jagannath Prabhu. So even though we can just be married for long, but then if anybody asks what he achieved as Grahasthas, not we touched many souls, not transformed many souls, but that what one cannot achieve, or Anadi Jagannath Prabhu could achieve in 6-7 years time. So this is a great inspiration for all of us. And I know it's not so easy to digest this kind of a big loss. When I think about Shanti Rupa Mataji and Dr. Prabhu, we always heard from the Acharyas, the spiritual master Srila Prabhupada, the more you advance, the harder the tests are. Here,
are the wonderful, great senior Vaishnavas amongst us, that they have taken every bit of it in a wonderful Krishna conscious way. If not for them, that probably I wouldn't have seen that anybody else would have taken this in a very Krishna conscious way. As I was telling in the beginning, she and Prabhu are one of my inspiration when I was taking up Krishna conscious many years back, because Guru Maharaj always loved them, and now I understand why Guru Maharaj loved them so much. And many of you don't know, last year Prabhu and Mataji lost their son, maybe a little more than a year, and this year lost their son-in-law. And look at their faith in Krishna consciousness, look at their strength, where they're drawing from. So this is a great inspiration. It should be a great inspiration for all of us, that how devotees not shaken up by the loss of body, but have a deep understanding of Krishna conscious philosophy, what we learn, what we understand, to be put into practice. So all glories to Shanti Rupa Mataji and Tattva Prabhu, and for their wonderful daughter Vrinda Maharani. They're all an inspiration for all of us in our lifetimes. I hope I personally feel that I just get some, even a small amount of such a courage and inspiration from their Krishna conscious lives. Srila Gurudev ki jai, Anadi Jagannath Prabhu ki jai. Vrinda Mataji. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasma. So yes, first of all, I am eternally indebted to Chaitanya Avatari Prabhu and Mataji, as was extensively discussed now. Prabhu and Mataji are the ones who actually introduced us and facilitated our marriage, and I am eternally indebted for having Prabhu as my husband, because he taught me so extensively and trained me so extensively that it was just really quite amazing. And I'm also, very, very deeply, I just want to express my deep gratitude to all the devotees here, because when my husband married me and first brought me here, this was my first home. Okay, so all the devotees, all of you were so kind and accommodating. Prabhu, Mataji, and all the devotees here were so kind and so accommodating and took such good care of us, always concerned that we were, riding home at night far away, always ensured that we had enough prasad. When my husband was in the hospital a few times, Mataji sent devotees immediately, and they took care of us so nicely, always looking out for us. So it was, I just don't know how to express this gratitude towards all of you. Like I said, this was my first home. And I know how important, this community was to Guru Maharaj, because I understood from the first day, because when the next day after we got married and we went to visit Guru Maharaj looked at my husband and said, "So you're Chaitanya Avatari's right-hand man." So it meant so much to Guru Maharaj, this community and Chaitanya Avatari Prabhu. And, they extensively, Guru Maharaj and my husband, they were discussing some of the services and events that were going on here in this community at that time. So I understood immediately. And just, a few devotees asked me, "Mataji, we just want to hear something from you as in the other temple as well, about how Prabhu was with you as a husband." I just want to let all of you know that however he was in the temple with the devotees, with his family, with everyone, he was the same at home, always selfless, completely beyond the bodily conception of life, never wanting to take service. I had such a hard time because he never wanted to take any service.
from me. That was his nature. And the other thing too, you know, that I always drew inspiration from him was he always kept Guru Maharaj in the center. Whatever he did, whatever actions that he, you know, his actions, thoughts, his decisions were always centered around. He would always ask himself, and that's how he always told me to do that. You know, always think about what Guru Maharaj would want you to do in this situation. If Guru Maharaj were here now, how would you behave? So that governed his every thought, you know, his every word and his every action. So that's what made him so exemplary. So I will not take any more time, but thank you all very, very much. Hare Krishna, Vansha Kalpa Tarobhyascha, Kripa Sindhubhyo Vacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namah. Please do some 5 minutes. That's all anything. So, thank you all of you for patiently hearing the glorification. I know that many of you wanted to speak. I was not given opportunity to speak anyway. I wanted to speak so much, but I will ensure that whatever my thoughts are somehow recorded or written somewhere, so it doesn't evaporate from my heart. I'm sure that it will not, but I want to ensure that whatever reflections I have about Jagannath Prabhu is shared. I know that many of them have in the queue, but unfortunately, in the interest of time. So those who didn't get a chance, they created a blog on the internet, so you can send your voice or written whatever form to that blog. So who's taking care of that? Maybe Vaishnava Prabhu will help you in getting that access so you can send. And so please express whatever gratitude you want to do to Anadi Jagannath Prabhu. And we have a lot of time. We can always meditate and you can write, because by glorifying a Vaishnava, our heart get purified. So please take some time to do that. So thank you all very much for gathering in spite of all the adverse weather condition. If all of you could come to participate in this Smriti Sabha, I thank all of you. And this is a great occasion for us to celebrate. As I said, one of our close family member has gone back home, as Guru Maharaj was saying, with all the devotees' prayers. So before we go for prasad, we all chant 3 times for Anadi Jagannath Prabhu from your heart. So our prayer has to speed up in reaching him to the Supreme Abode. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Panchatattva Bhagavan ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Ananta Kodi Vaishnavrinda ki, Gaura Premanande. हरे कृष्णा। अगला कार्यक्रम है महाप्रसाद। पहले माता जी लोग सब लोग इस तरफ चलाइए, फिर उसके बाद प्रभु लोग पीछे पीछे चला सकते। हरे कृष्णा।
सब लोग साथ साथ में बोले, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यम वतन राजन विश्वासो नैव जायते शरीरारे अविद्या जाल जोड़ेन्द्रियता है काल जिह्वा पेले विषय सागरे तारा मात्य जीवाति लोभो माया सुधर्मति ताके चीता कठिन संसारे कृष्ण वरदया मोहे करी बरे जीवा जाए स्वप्रसार अनदि लोपाय से अनामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेरा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री जगन्नाथ बालदेव सुभद्रमाय सुदर्शन चक्र निताय गौरचंद प्रभुपाद गुरु महाराज महाप्रसाद में